Hello, hello, hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और yes, सरप्राइज स्ट्रीम हाँ मैंने ब्रॉडकास्ट नहीं किया इतना बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं थोड़ा टेस्ट करना चाह रहा हूँ जस्ट यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक गुडनेस यार हमारे पास है कितने 4100 सब्सक्राइबर्स है थैंक्स अ लॉट जो भी ज्वाइन करने वाला है बट मैं देखने वाला हूँ भाई कितनों ने एक्चुअली बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाया है बिकॉज दैट इज अ क्विक और रादर अ बिग डाउट मेरे मन में क्योंकि यार हम काफी सारे करते हैं स्टैंड अलोन वीडियोस भी एंड दिस इज द बेस्ट वे दैट मैं एड्रेस कर सकता हूँ ये चीज इसीलिए मैं आ रहा हूँ अलॉन्ग विद द पिंक यार सब लोग बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाइए यार आई डोंट नो हाउ इट मैटर फॉर यू इट रियली मैटर्स so if you have not pressed that bell notification icon for Almighty Blues FC and Almighty Sports Plus again please do consider हम काफी सारे शॉर्ट वीडियोस भी करते हैं एंड फॉर वॉट एवर रीजन भाई लाइव में आई गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट इतना प्यार मिलता है लेकिन इतना प्यार हम मुझे नहीं मिलता है ऑन स्टैंड ऑन वीडियोस मे बी इज अ क्वालिटी ऑफ वीडियोस मे बी आपने देखा ही नहीं मुझे सेकंड मौका दिया नहीं मे बी आपने देखा होगा कुछ वीडियोस प्रीवियसली आपको नहीं अच्छे लगेंगे मे बी आई एम नॉट इम्प्रूव let me know I really want help here or yes I just want to see कितने हैं हमारे डेडिकेटेड सब्सक्राइबर्स who come on and not just that सच में बोलूं यहाँ पर मैं आया हूँ अपनी भड़ास निकालने जस्ट टू काइंड ऑफ स्पीक अबाउट चेल्सी आपने फिगर आउट कर लिया होगा फ्रॉम द थंबनेल but not just that I'll certainly take your questions क्योंकि यार last few transfer streams में I've been missing a few questions as well so let me select a few questions and take them pretty sure आप लोग के पास है काफी सारे और again काफी लोग हैं ऑनलाइन जुड़ जाइए और कमेंट करिए गेट इन योर क्वेश्चंस गेट इन योर कमेंट्स गेट इन योर रिएक्शन जो चल रहे हैं और कोई मुझे ट्विटर में फॉलो करता है तो माइट हैव फिगर्ड इट आउट व्हाट काइंड ऑफ मूड आई एम इन राइट नाउ लेकिन यस पार्थ हेलो टू पार्थ ऑफ कोर्स एंड लुक इन द हाउस एज वेल एंड अगेन क्योंकि वापस से लोग लेट ज्वाइन किए आई नो पीपल माइट रीवॉच लेटर ऑन लेकिन आई हैव टू रिपीट दिस दैट प्लीज कंसीडर hitting that bell notifications icon trust me मैं चाहता हूँ to go full time on YouTube it is only possible for me अगर मुझे प्यार मिलता रहे और साथ में feedback भी मिले so please hit that bell notification icon on both Almighty Blues FC and Almighty Sports Plus you might think यहाँ पर आ गया बंदा कटोरी लेकर लेकिन fact is this is the only way for me to address you right क्योंकि आप इतना basically मुझे viral reaction नहीं देते on Twitter और Instagram which is fine maybe I'm not having that knack लेकिन हाँ अगर कुछ फीडबैक है तो प्लीज दीजिए बिकॉज आई एम ट्राइंग फॉर लॉट ऑफ कंटेंट नॉट जस्ट ऑन दिस चैनल ऑन बोथ द चैनल्स आई वुड लव इट इफ आई गेट लिटिल more love of course thankful for all the love that I've been getting cannot say that that नहीं मिल रहा absolutely मिल रहा है भाई Matt Law literally sold his soul to Burley क्या बोले यार मैट लॉ का काफी क्वेश्चन मार्क थे इवन विद रूडिगर ही हैड प्रॉब्लम्स ही इज काइंड ऑफ बहुत ही सिलेक्टिव हो आई एग्री विद दैट प्लीज रीजन दे दो छोटे भाई के लिए इतना नहीं कर सकते भाई सैफ दे देंगे यार अभी के लिए नहीं अभी तो यार हम लिटरली प्लेयर्स यार 20 प्लेयर्स भी है क्या चेल्सी में आई नो लोन आर्मी एक समय में थी हमारे 40-50 लोग इतने लोग भी है क्या चेल्सी में यार आप सोचो हेलो टू पोटैटो बॉय यार 100% आपके तो बहुत कमेंट्स होंगे एंड विल बी स्पीकिंग आज मेनली स्पर्स चेल्सी बार्सा और मे बी ऑलवेज मैन यूनाइटेड और इंटर मिलान एसी मिलान काफी सारे कॉन्वर्सेशन हम कर सकते हैं लेकिन स्पर्स डेफिनेटली करेंगे भाई अलोंग विद चेल्सी लेट्स प्ले एज वेल हेलो एंड अगेन यार आई कांट थैंक इनफ फॉर जो भी ज्वाइन कर रहा है एंड ऑफ कोर्स could be putting up questions I'll be taking it as well absolutely Luke De Jong means a lot and big up to Mana or yes this is another announcement क्योंकि यार for whatever reason I was kind of requesting a few streams as well लेकिन the fact is यार we are going to add a lot more things for members so big up to Mana and all the members there so slowly and steadily we'll add right so if आपको लगता है कि यार overall I bring good content and if you think you guys can afford please consider becoming a member as well it helps because for whatever reason I understand आप super chats नहीं देख पाते हो enough that's fair enough but again if members बन जाओ maybe we'll have more conversations going forward and that's something that I'm looking forward to but without that और भी काफी try करूंगा absolutely यार ये तो चेल्सी के साथ ये होता है एटलीस्ट ट्रॉफी तो जीत जाते हैं फिर भी मतलब अगेन जीत जाते हैं लेकिन लास्ट ईयर गौरव डिड वी विन एनी ट्रॉफीज इफ नॉट फॉर द प्रीवियस सीजन्स लेगेसी नहीं आई डोंट थिंक सो वी वन लेट्स बी ऑनेस्ट फाइनल्स रीच किए एंड ऑल दैट यस एब्सोल्युटली आई एम नॉट सेइंग यार चेल्सी आर डाउन इन द डंप्स नहीं वो नहीं है एब्सोल्युटली हमारे पास है काफी क्षमता है लेकिन व्हाई आर वी गेटिंग टू say a Liverpool or a Man City in recent years there are reasons out there और वो हम डिस्कस करने वाले हैं Spurs doing serious business exactly और मैं यहाँ पर क्यों आ रहा हूँ सबसे पहले तो भाई Spurs के कारण in a way directly I know Potato Boy और couple of Spurs fans in the house
लेकिन यार ये ट्वीट था, तो बाय द वे हाँ, कंग्रेचुलेशंस टू स्पर्स, येट अनदर साइनिंग। भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, स्पर्स ने ऑलरेडी 4 साइनिंग्स कर दी इस विंडो में, 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेन वो फॉर्मली हुआ नहीं है, रिचार्लिसन टू स्पर्स। और व्हाट 50 मिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 50 मिलियन फॉर अ पर्सन हु मे नॉट स्टार्ट एवरी गेम, थोड़ा सा डाइसी लग रहा है मुझे तो। लेकिन एंटोनियो कॉन्टे वो 3-5-2 भी खेलते हैं, तो हो सकता है he'll try and rotate सॉन, क्योंकि सॉन भी इंजरी प्रोन है, तो वो हो सकता है। आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन हाँ, अगेन ये है, टॉटनहम हैव साइंड रिचार्लिसन ऑन अ परमानेंट डील, हियर वी गो, फर्स्ट पार्ट ऑफ पेपर वर्क्स now signed with Everton after full agreement on personal terms, 50 million pounds guaranteed plus add-ons। तो भाई इक्वल टू रफीनिया बिड जो हमारा था लीड्स, बट ही प्लेज इन द विंग एज वेल एज अ स्ट्राइकर। और उन्हें उनको चाहिए एक बैकअप स्ट्राइकर फ्रॉम इयर्स टुगेदर आफ्टर लोरेंटे उनको मिला ही नहीं। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइनिंग इन माय ओपिनियन, कंसीडरिंग यार ही इज नॉट अ पर्सन जहां पर वो विल बी देयर फर्स्ट नेम द टीम शीट। ब्रिलियंट साइनिंग। हाँ, पैसे है तो भाई क्यों नहीं, डैनियल लेवी इतने सालों से बचा रहे, किसके लिए बचा रहे। और यहाँ पर वैसे ही वी हैव सेफ इन द हाउस। सेफ, थैंक्स अ लॉट, मींस अ लॉट कि आप बन गए हो, एब्सोल्युटली यू आर अ न्यू मेंबर, रियली। मतलब अगेन मेंबर्स, देयर इज एन इमोजी जो हमने रखा है, यू कैन यूज इट बाय यूजिंग कोलन, द इमोजी नेम एंड अगेन कोलन, और वैसे हम वी कैन डेफिनेटली काइंड ऑफ हैव मोर इंटरेक्शंस, हैव मोर फन इन द चैट, और a lot more ideas जो आप कर सकते हो। So please share, if you can even DM me, definitely be in contact brother, and certainly means a lot, shout out आपके लिए। यहाँ पर देखते हैं और कुछ कमेंट्स ले लेते हैं क्विकली बिफोर आई मूव ऑन टू चेल्सी एंड अदर क्लब्स। बिग अप अंकित भैया, एब्सोल्युटली यार, ये तो ले लिया था हमने, कोई नहीं। ओके, जेम्स और वॉकर हु इज द मोस्ट कंप्लीट फुल बैक, आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं बोलूंगा काइल वॉकर, एज मच एज मैं चाहता हूँ रीस जेम्स बोलूं, और ही विल बी, मुझे लगता है रीस जेम्स विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, नो टू वेज अबाउट, एब्सोल्युटली नॉट दैट ही इज ऑलरेडी, लेकिन अभी के लिए वॉकर इज द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर। हाँ, यू कैन से दैट वॉकर इन रीडिंग द गेम इज नॉट एज गुड, लेकिन भाई जेम्स एरियली हैज इश्यूज इन माय ओपिनियन। रीच जेम्स का जूता भी नहीं। who will have a great window, just wait। अभी के लिए यार, आर्ग्यूबली आई थिंक स्पर्स इन प्रीमियर लीग में बोलूंगा, स्पर्स ओवरऑल इतना बेसिकली काइंड ऑफ एडेड पर्सनल, yes I know Liverpool have added a big name, Man City have added a couple of big names, लेकिन I think Spurs arguably has to be the the team in the Premier League which has won the league, in terms of the transfers। Okay, yes, absolutely, The Rock says like, share, subscribe, and of course road to 5k on both our channels, और भूलिएगा मत, we have an Almighty Sports Plus भी। I don't know for whatever reason people are very hesitant to subscribe to that channel, so I would love to get some feedback कि वहाँ क्या है, क्योंकि वहाँ पर और भी variety, in fact I'm kind of surprised वहाँ पर, लेकिन it is what it is, right? Definitely I have to accept जो feedback हो। We will have a great, okay, we'll have a great window, just wait। CFC Blues, I agree, मतलब there are very few windows जहाँ पर आप बोलोगे चेल्सी ने हगा है proper, right? If not for a transfer ban etc, right? लेकिन at the same time I think doing early is different than doing a good window, right? Because doing early is important आज के दिन में, क्योंकि यार we are undergoing a change already, so ज्यादा टाइम बिताया वो लोग along with the new players, along with the team, with the coach, new ownership, it's better in my opinion, that's the whole point, and we might lose out on players, right? That's the only thing। Advanced talk with Spence, third player of the day। Oh, okay। चलो ले लेते हैं पोटैटो बॉय, congratulations again and again। Yes, people, the big announcement from Spurs side is, and that is for Spurs, like again I have to remove my Chelsea badge for the time being, और मैं बोलना चाहूंगा Spurs, well done। They have what, Foster as a goalkeeper, they have what, Perisic as a wing back or a winger, of course a great world class winger for me, and then they have Bissouma on a cheap। उस समय मैं बोल रहा था ओके इज नॉट अ वर्ल्ड बीटर एंड ऑल दैट, लेकिन अब पांचों ट्रांसफर साथ में देखो तो यार भाई क्या साइनिंग थी वो। एंड ऑफ कोर्स नाउ Richarlison एज अ स्ट्राइकर, अ बैकअप स्ट्राइकर, अ विंगर एज वेल। 50 मिलियन उसके लिए दिया। डैनियल लीवी, आई कैन बिलीव इट। एंड जैसे बोल रहे अपने भाई ऑन इन द चैट, इट्स गोना बी स्पेंस मोस्ट प्रोबब्ली एट राइट बैक फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट। बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, लेकिन नॉट जस्ट दैट, स्पर्स फैंस, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज कमिंग? Tielemans, yes, Tielemans from Leicester City, Spurs are going for Tielemans as well। भाई इतने मिडफील्डर से अचार डालोगे क्या? I have no idea what's happening is absolutely। Okay, सादिक भाई, बिग अप भाई, सादिक भाई, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ये मुझे याद है सादिक भाई और मैं डिस्कस किए थे when we discussed the the team of the season, I remember, and I kind of did not go for James myself।
Despite वो reason था obviously because of injury and all that, लेकिन सादिक भाई नहीं, when he plays he is the best, and I won't deny that absolutely. लेकिन वही है, I think in terms of aerial ability, I believe that crosses में Reece James is very susceptible, Sadiq bhai, but that's the reality I'm just kind of sharing with you. But he's brilliant, yeah, no two ways about it. Any chance Neymar goes to Chelsea? Well, chance, there's always a chance, there's always a hope, लेकिन realistically मैं बोलूंगा weak है अभी, क्योंकि I don't think कि यार चेल्सी का कंसंट्रेशन अभी नेमार में है, चेल्सी का कंसंट्रेशन अभी है ऑल ऑन स्टर्लिंग, ऑल ऑन एकी. अभी मैन सिटी के साथ बातें चल रही है एंड डिपेंड्स ऑन मैन सिटी whether they are willing to give two players to us or not, but that's the bottom line in my opinion, right? भाई कॉन्टे पागल हो गया, इतने बंदे तो जिंदगी में ज्वाइन ना किए स्पर्स के लिए. एग्जैक्टली मैन, कॉन्टे ने अल्टीमेटम दिया होगा भाई, डैनियल लेवी तू चाहता है मैं रहूं, तू चाहता है कि ना 2008 के बाद हमने ट्रॉफीज नहीं जीते, बोलना ही था वो तो, 2008 के बाद ट्रॉफी नहीं जीते, मैं जीतूं और यहाँ पर मुझे दे दे चेकबुक, मैं साइन करने वाला हूँ, व्हाट एवर इट इज, फिर आई गारंटी आई गिव यू ट्रॉफी और फिर देखा जाएगा. ऐसे भी कॉन्टे भाई 2 सीजन से ज्यादा रहने नहीं वाले, ठीक है, उनको पता है. तो यार दिस इज मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर कॉन्टे एंड स्पर्स. And yes, let's get in the likes, people. Come on, over 40 log hai. Hopefully, we'll have over 80 people as well watching us, because we are going to be discussing each and every club there, and of course, taking a lot of questions. So thanks, Manav, again. 6 players to Spurs this window: Perisic, Foster, Bissouma, Richarlison, Longley. Oh yeah, Longley bhi 7 हो गए. Tielemans, white potato boy. What do you think, Tielemans? Do you see कि वो bit too much होगा, too many midfielders, or do you see भाई एक और midfielder जाएगा and Tielemans might come in? Okay, then by the way, big up to Sadiq bhai for yesterday's who am I. मैं तो अभी तक spellbound हूँ for people out there. काफी सारे DMs हैं मुझे. सादिक भाई मिलेंगे वापस क्वार्टर फाइनल में, उसके पहले भी काफी हमें बात करनी है, तो वो सब मिलेंगे ही. ट्रांसफर गैस वाला गेम ट्राई करो ना प्लीज, हाई रिक्वेस्ट. यस, मुझे आया है काफी रिक्वेस्ट ये, करेंगे भाई. पहले मुक्तेश भाई को लेंगे, यू नो व्हाट यू थिंक, आई आस्क हिम इफ ही इज विलिंग टू कम. रीस जेम्स का जूता ये तो देख लिया था, 2-3 बार नहीं चाहिए. व्हाई वुड यू कंसीडर ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्लेयर्स? आई थिंक इट्स रॉनी. हु वुड यू कंसीडर? ओके, ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्लेयर भाई, मतलब मैं बायस टू बिग टाइम, लेकिन आई थिंक द प्लेयर हु डिड नॉट प्ले इनफ फॉर इंग्लैंड, who should have played, is John Terry. In my opinion, I genuinely believe that John Terry को ज्यादा खेलना चाहिए था, लेकिन I agree, like if not like Rooney has to be one of the greatest, at least in my kind of lifetime. He has been one of the greatest. I also really like Beckham, I have to say. मतलब maybe एक personal touch था, something I liked about Beckham. Well, Deco Snake अभी तक बोल नहीं सकते. Okay, CFC Blues and every Chelsea fan out there, every Spurs fan out there, and even neutrals, सुन लीजिए. तो क्या हुआ है, डेको कल बिताए आधा दिन बार्सिलोना में, ठीक है, एट द कैंप नो, आई बिलीव, व्हाटएवर द हेडक्वार्टर्स वेयरएवर इट इज, राइट. बिग अप टू देयर मीटिंग कि यार ये सब बात कर रहे हैं हम लोग. लेकिन आज एज पर रिपोर्ट्स डेको वाज देयर एट स्टैमफोर्ड ब्रिज और उन्होंने बात की है, एंड एज थिंग्स स्टैंड ही हैज अपडेटेड दैट भाई बारसा नहीं आई है, इज अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट. सो डेफिनेटली 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है चेल्सी ने टू रफीनिया. So that is something that it seems, as per reports, that Chelsea has a better contract as well. लेकिन February में already personal terms Raphinha ने agree कर लिया था with Barca. No secrets there. मैं झूठ नहीं बोलूंगा. Raphinha's first choice is FC Barcelona. Let's be honest. ठीक है. He is a Brazilian. He will go to FC Barcelona given a choice. लेकिन भाई, if he can do what maybe few players did for us and then moved on, it's okay. It's okay with me. लेकिन आप बोलिए भाई Chelsea fans, what do you feel about it? और I'm asking because a lot of question marks यहाँ पर, because आप अपनी transfer strategy, I don't think we have a strategy. I'll be very honest with you. यहाँ पर I know for people who follow me on Twitter, आपने देखा होगा मेरा ट्वीट, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज और करने वाला हूँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में है ट्वीट ये. तो बेसिकली चेल्सी मेड एन अटेम्प्ट टू हाईजैक रिचार्लिसन एज वेल, ठीक है, before agreement between Everton and Tottenham. I agree, I love a hijack bhai, I love a hijack. Until date मैं brag करता हूँ about Willian, we love hijacks, right, about John Obi Mikel. लेकिन भाई doing it for Raphinha then getting hijacked nearly, अभी तक हुआ नहीं technically, but whatever. And उसके उस पर भी मैंने वीडियो बनाया Almighty Sports और rather Almighty Sports Plus पर, देख लीजिए please. But Richarlison पे भी now look at my reply. I don't know how many of you agree with that reply. Like basically हम क्या जा रहे थे, हाँ, previously Chelsea का problem क्या था, we used to go with only one player, concentrate on only one player in a transfer window. अगर वो हो जाता है फिर move on to a second player, right? अभी as per reports, because it's a consortium, because it's basically multiple hats wear कर रहे, Todd Bowley and all that,
तो काफी प्लेयर्स के साथ बातें चल रही है और काफी प्लेयर्स के एजेंट के साथ बातें चल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वी वर विलिंग टू बिड फॉर रिचार्लिसन, स्टर्लिंग और नेमार एक में से, डेम्बेले और रफीनिया उनमें से एक, इन वन विंडो, जब हमारे पास डिफेंडर्स की कमी है भाई। सेंटर बैक आज के दिन में कौन है चेल्सी फुटबॉल क्लब में? मैं बोलूं कौन है फर्स्ट फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक अगर बैक थ्री खिलाएंगे? वी हैव मलन सार, थियागो सिल्वा एंड चालोबा, दैट इज आवर फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक। इमेजिन। हाँ, एस्पिलिक्वेटा अभी तक क्लियर नहीं है मामला, इसलिए मैंने काउंट नहीं किया अभी तक, राइट? तो दैट इज व्हाट इट इज। तो आप बोलिए भाई, मतलब मैं तो आई एम लाइक शॉक दैट चेल्सी डोंट हैव अ ट्रांसफर स्ट्रेटजी, और यू वुड से दैट maybe it is because of no director, no proper director of football. That is something that हमें चाहिए urgently, desperately, and that is the reason why it's going. But again, coming back to Raphinha, आई फील कि यार बॉल इज इन रफीनियास कोर्ट, उसकी मर्जी होगी। इफ ही इज लाइक ओके चलो यार मैंने प्रीमियर लीग में अच्छा किया है, लेट मी बिकम फ्रॉम अ वेरी गुड प्लेयर इन द प्रीमियर लीग टू वन ऑफ द प्रीमियर लीग ग्रेट्स, और मे बी बी इन शाउट फॉर वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स इन द प्रीमियर लीग। मतलब इफ ही हैज दैट थिंग, क्योंकि प्रीमियर लीग ही ऑलरेडी गॉट इट वेल, राइट? तो इफ ही इज डूइंग दैट विद चेल्सी, ब्रिलियंट फॉर चेल्सी, or then moves on after 3 years, right? Like back in the day, Hazard moved. Just saying out there. Sorry, and Robin moved as well. क्या लगता है? I know Raphinha is far from their quality. He is good, but not as good. But you never know, right? He has quality and potential. क्योंकि अभी तक 25 साल का ही है। Where will Raphinha end up? जैसे मैंने बोला, मेरा गट बोलता है अभी भी ज्यादा, I would say 60% Chelsea, 40% Barcelona, right? Because of पैसे है भाई, पैसे बोलते हैं. But can Barcelona afford him? It depends on a lot of ifs and buts with maybe Lewandowski, maybe Kounde situation. Kounde तो भाई पता नहीं स्टोरी कहाँ ही गया वो. Raphinha is a double-minded, can next Lukaku. लेकिन अगेन लुकाकू में आई थिंक ओनस ज्यादा ज्यादा था, मच मोर ओनस था. ही वाज लाइक द फोकल पॉइंट, ही वाज द ट्रांसफर ऑफ द एंटायर विंडो. Saul was, come on, loan. I don't think we can even count as this real transfer. I think Lukaku was different. Of course, we were chasing Haaland, to that level of caliber of player हम expect कर रहे थे, right? Raphinha, I don't think that is the level. We would expect a much better upgrade to Ziyech. That's the reality. Okay, fine, Syed bhai. तो हम FIFA, yes, for people out there who do not know, हम FIFA में भी आर ट्राई कर रहे हैं on Almighty Sports Plus, along with a lot of football and cricket, apart from that as well, in terms of videos and live streams. So please join us and hit that bell notification icon. I always tag them in the description below my channels. Yes, we will do a little late, Sayed, लेकिन करेंगे आज भाई. मतलब I hope I don't disappoint you this time around. Okay, Raphinha गिरगिट है. Ankit, why Chelsea United not go for Feyenoord centre back? वेल अगेन आप बोल सकते हो कि यार वही है, फाइनोड में सेनेसी वाज वेरी गुड. आई रिमेंबर वाचिंग द मैच, आई थिंक विद सादिक भाई सेल्फ अगेन हमने बात किया था. लेकिन द फैक्ट इज अगर लिसांड्रो मार्टिनेज अवेलेबल है, आई थिंक ही इज एन अपग्रेड. ही कैन आल्सो प्ले इन सीडीएम, सो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग फॉर दैट. वेयर इन चेल्सी आई थिंक हमें चाहिए एक मोर प्रोवन, मोर काइंड ऑफ as in world class level player. I know Senesi is very good, but not as good in my opinion. Not as tested, put it that way. Not as good, गलत रहेगा बोलना, लेकिन not as tested. We want someone who's much more tested, in my opinion, right? Walker main duty is to be always defensively rather than attack. He's a great attacker as per rumors. Pep is going for 3-5-2. He used to be a great attacker for Spurs. He was a brilliant right back, attacking right back, in my opinion. Dembele on the right, Sterling on the left. Dembele भाई, अभी Dembele is what? So we have to go for backup because of the fact that Sterling, in case चलो Sterling आ जाते हैं, but in case Raphinha doesn't come, then Dembele is what we have to go for. And let's be honest, we will be the backup and we will get the backup. लेकिन आने के बाद अगर settle हो जाए, if he's able to settle, of course he's played with Tuchel and Pulisic, so that helps with Dembele. Had Deco landed at London for meeting? Yes, Aniket, this is right. मतलब again, multiple reports here, I cannot for sure say, लेकिन in fact he was at Stamford Bridge, it seems. That's the latest news. लेकिन whether it was positive or negative, that few hours में पता लग जाएगा. Absolutely लगता है positive है. Should Barca go for Isaac as Bayern want too much for Leva? I think नहीं. Alexander Isaac is not enough proven, in my opinion. मतलब हाँ, काफी अच्छे player है, but in my opinion is not as much proven. I think is मतलब वही आप, people who do well in international tournaments are always hyped. James Rodriguez, brilliant kind of example, right? Richarlison will be the new Costa. Is it Douglas Costa or अपने Chelsea के Diego Costa? Let me know. I think you mean Diego Costa. मैंने बोला था कल स्ट्रीट में. He is the poor man's Diego Costa, absolutely, and more. Who knows? Because अभी भी ceiling है, he can improve as a player, but can he play week in week out? I'll be like भाई,
ये तो लड़ लेगा भाई स्पर्स के साथ अगर नहीं स्टार्ट करता है तो। थैंक यू मिस्टर चेल्सी फॉर जॉइनिंग। यस आई स्टिल फील 60% बोला मैं दे रहा हूँ लॉन्ग लेट स्पर्स डन डील। तो अगेन आई थिंक इट्स लोन पे है, नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पोटैटो बॉय, बट आई थिंक नॉट अ बैड ऑप्शन बट नॉट अ ग्रेट ऑप्शन इधर। मैं मतलब लॉन्गले के लिए इतना मतलब एक्साइटेड नहीं हूँ बिकॉज दे हैव अ डेविस ऑलरेडी, अपग्रेड नहीं है, काइंड ऑफ एट पार। आई नो लॉन्गले वाज वेरी गुड सेविया बट बारसा में नहीं। ओके टिकी डेम्बेले, अरे भाई यहाँ पर बारसा की क्वेश्चन मुझे पूछना था बारसा के बारे में। आई डोंट नो इफ पीपल हर्ड सादिक भाई एंड अदर्स इफ यू आर देयर इन द चैट, do let me know what do you think, what do you think about Ronald Koeman. Ronald Koeman, the Barca legend, has said bhai Barcelona are still in old times, they are still playing, trying to play tiki taka with 4-3-3 and what all that. What do you think about that? Don't you think it's a bit harsh on Xavi? Matlab, I don't know man, matlab he's like game has moved on, game has become much more powerful and whatnot. I think all rubbish, थोड़े salty है Ronald Koeman मेरे ख्याल से। कोई नहीं, impressive, thank you Strip Bear. Big up to Shibber. Ankit, your thoughts on Chelsea trying to hijack Richarlison from Spurs? I already did. I think I took the chat late, but again, any chances Neymar to Chelsea? Okay, I've already taken all this. So let me go down. Again, I'll be selecting comments, people. If you want to prioritize on chat, definitely you can super chat. Naito, we'll try and highlight the members chat, or we'll come back to the other questions which are more relevant. Okay, I follow every Spurs account. Tielemans, nahi bhai, Tielemans ke ho rahe hai. I don't know whether it's a Spurs fan account putting it across, but I did see a lot of tweets. Or they are offering, I think, Harry Winks, क्योंकि Harry Winks पहले जाने वाला था Everton, लेकिन he's not going to Everton. He might go to Leicester. So in return, they might get Tielemans. That's the latest I'm hearing. Best English player is GB Greaves. Again, I haven't seen him, so I've only judged on what I've seen, but absolutely by. If Gabriel Jesus and Raheem Sterling were to leave this summer, how should we replace them? Okay, so I think Pritam, you're talking about Man City, obviously. Yeah, देखो, in the front three, you will have, I think Foden can play on the left hand side with Mahrez on the right hand side, with obviously, your the man, Haaland in center. Okay, in midfield, you'll have Kevin De Bruyne, you'll have Bernardo Silva, and you'll have Rodri. That is one way. You can have, on the other hand, you can also have Grealish starting on the left hand side, Foden starting on the right hand side, and you can have maybe a Kevin De Bruyne or Gundogan, along with Rodri. तो इतने सारे ऑप्शंस है भाई, कैल्विन फिलिप्स के तो नाम लिया ही नहीं मैंने, तो थिंक अबाउट इट, देयर आर सो मेनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और अल्वारेज उसका भी नाम नहीं लिया है मैंने, तो थिंक अबाउट इट, यू हैव लाइक इतने सारे ऑप्शंस, यू डोंट नीड एनी मोर स्ट्राइकर्स, यू डोंट नीड एनी मोर विंगर्स। आपको क्या चाहिए अभी, इन माय ओपिनियन ऑल यू नीड इज प्रोबेबली एक डिफेंडर, मार्क कुकरेला हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, and that is one, and maybe another defender on the right hand side. नहीं वो नहीं चाहिए क्योंकि मार्क कुकरेला आने के बाद I think Cancelo can play on the right hand side, so it's fine. I think you are good, simply good. हाँ, नेथन आकी might leave, तो वहां पर थोड़ा सोचने की दरकार है मेरे ख्याल से, but otherwise you're good. Come on, greatest English has to be Super Frank Lampard, my opinion. No offense. Thank you, bhai. I didn't know you thought Super Frank Lampard is the greatest English player, but great to know. I kind of would put him in the top 5 definitely. लेकिन मुझे लगता है जॉन टेरी doesn't get as much credit as it deserves. Just check Lukaku's interview. He's talking as if he has already earned his place within the Inter fans. Dishan, thank you भाई, thank you. Big up to Dishan को बोलने के लिए भाई. You have no idea ये comment मुझे पढ़कर कितनी खुशी मिली. इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई. सच में बोल रहा हूँ भाई. Man, Lukaku has frustrated me to the core. His vibes are really, really bad. I hate him, man. I'm hating him. Yes, you are hearing it right. I don't want to say it. Hating players is not a good thing. But the fact is, this guy literally played Chelsea, man. He's literally played Chelsea. He's literally played with emotions. He's played with, what people want to think. He's made them think. I don't know what to say. और ये बंदा आकर मेरे लिए कहीं भी जाता है, लगता है कि यार he's the hero, he's the VIP. Man, first prove yourself. Exactly my point. Dishan, great point, man. Great point. और again, मैंने react किया है इस पर on Almighty Sports Plus. So again, people watching, request again, please will mean a lot if you guys also support my individual videos जो मैं रात भर बनकर edit करता हूँ, मैं research करके करता हूँ. So please, if you feel that there is some amount of feedback, I am more than happy to take that feedback. लेकिन I believe that my quality of single videos have also improved over the course of time. If not,
do let me know. I will work on it, but at least give it a chance, right? Both Frank Kessie and Andreas Christensen have all paperwork signed with Barcelona. Contracts are ready. Yes, मैंने पढ़ा ये. But again, this is old news. रखते हैं. It's kind of obvious. Pretty sure यार ये दोनों register हो जाते हैं. Let's be honest. वो it's just a matter of time. The fact that वो जा रहे हैं for Raphinha and you're telling me the Frank Kessie और Andreas Christensen को नहीं कर पाएंगे, वो नहीं होने वाला, राइट? तो होने वाला था रखते हैं, बट बिग अप टू यू. Raphinha गिरगिट प्लस चलो कोई नहीं. एंड अगेन देयर वर अ फ्यू कमेंट जहां पर अगेन पीपल लेट्स पुट इन द लाइक्स एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज इट हेल्प्स अ लॉट. आई थिंक एज अ बार्सा फैन नहीं कर लाएगी hijack unless Raphinha rejects Chelsea and Leeds only have Barca offer and Raphinha presses his way out to Barca just like Leva. Other than that, I don't think. I don't know. Lewandowski सच में स्ट्राइक पर है क्या? और रूमर्स है बाय फैंस. I don't know. अंकित भैया शायद बार्सा ने अपने 10% टीवी राइट सेल कर दिए फॉर प्लेयर साइनिंग्स. हमें पता है भाई लीवर्स, इकोनॉमिक लीवर्स कैसे हुए. मतलब द फैक्ट दैट दे हैव वो गिरवी पे रखे और दैट इज द थिंग. When they can sign players, they should sign, लेकिन only if it's necessary they will sign, in my opinion. So I agree with Ali Gaming and Lucy to an extent. Big up to NS Sports TV, Nipun in the house. Thank you for joining, bro. Every team got quality attackers. Then you have City with Haaland and KDB. that's basically एक आया भाई, मतलब बड़ा भाई वाला comment. Bayern targeting Jonathan David as Lewandowski backup. Okay, interesting. मैं कहता हूँ ये क्या कमेंट आया देखते हैं वापस से. सुमन चैटर्जी बोल रहे हैं मैं कहता हूँ अनहैप्पी प्लेयर ना लाओ, लकाका 2.0 ना हो जाए. आई डोंट थिंक अनहैप्पी है सुमन. तो देयर इज अ डिफरेंस. तो एक होता है कि यार आपको क्लब जबरदस्ती सेल कर रही है, ठीक है. एक होता है कि यार आप आते हो बट दैट इज नॉट ए प्रिफर्ड चॉइस, ठीक है. और लुकाकू का थोड़ा सा डेस्परेट सिचुएशन था क्योंकि इंटर के पास पैसे ही नहीं थे. तो इंटर वाज लाइक नहीं भाई तू जा. और लुकाकू ऑब्वियसली फाइनली मान गए और वो दिखाया नहीं ऐसा बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज अ चेल्सी फैन एज वेल. भूलिए मत वो सच है, उतना पार्ट सच है. And he's like, okay, fine. He has unfinished business. He knows the Premier League and all those things, and he'll come back. And obviously, there is a Chelsea connection, so हो गया. लेकिन Raphinha का different है. I don't think Leeds in a situation कि उनको sell करना ही है. Remember, he helped them stay in the league. लेकिन the fact कि उनको मिल रहे 3-4 bids, so they are going for the best bid obviously. और Leeds और Raphinha ने ऐसा नहीं बोला है यार he hates Chelsea or something like that. In fact, उसके पास है भाई यहाँ पर Brazilians are there. Remember. Thiago Silva, even Emerson and Jorginho are technically Brazilians. You know that? Ernesto Valverde, yes, Athletic Bilbao manager. I saw that. And Tolisso to Lyon confirmed. Lucas Paqueta for Newcastle अभी लग रहा है. Absolutely. हाँ, सच में. हाँ, I know Lucas Paqueta is more like an attacking midfielder or maybe, sometimes like a second striker as well. But let's be honest, Lyon will be a selling club this time in my opinion. हाँ, they were not able to. उन्होंने वापस से मलेशिया के लिए bid किया था, rebid. They tried to hijack. लेकिन I think Tyrell Malacia was happy with Manchester United. लेकिन in terms of Tolisso to Lyon, भाई, not a bad move. Not a club which relies to on a player to win every match for them. So fair enough. और Tolisso has that, or rather experience मैं बोलूँगा at the highest level. काफी injury prone है, but on a free if I'm not wrong, Nano, correct me if I'm wrong. But that's, I think, very good business for Lyon and Liga in my opinion, because I think he was not getting enough game time anyway. I know injured थे फिर भी. और मैं बोलता भाई, worst case में we'll go and get some person on free like this. Why not Tolisso? मैं तो बोलता हूँ. I know injury prone and all that. Am I getting too desperate or what? I don't know. भाई Raphinha Barca choice और Chelsea दोनों ही situations Champions League खेलने वाला है. Yes. Fair enough. Some reaction on Florentine Pogba to ATK Mohan Bagan. वो मैंने already कर दिया है सोनाली. Thanks for joining. But the fact is, भाई मैंने बोला था उस दिन stream में जब आया था news that India has got the better Pogba at least for the time being in terms of temperament. लेकिन reality is that कि भाई let's be honest that he's not your world class player, but काफी not just him, काफी सारे ओवरसीज प्लेयर्स आ रहे हैं इंडियन आईएसएल में. तो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी कि हो रहा है ज्यादा मच मोर. और आई डोंट नो क्या आप लोगों ने सुना है. आई थिंक स्टीफन योविटिच, आई थिंक मैन सिटी फैंस विल बी नोइंग. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो केरला ब्लास्टर्स में आ गया. आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. वाओ, दैट इज सम न्यूज. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई एम प्रीटी श्योर मैंने पढ़ा है कि ही इज कमिंग और इमिनेंट डेफिनेटली.
और रफीनिया, ओके, इफ गैब्रियल जेसस, अच्छा मैं कर दिया था ये प्रीतम ब्रो, ओके। नेमार ऑन लोन इज एन ऑप्शन, यस दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर एज वेल, दैट कैन बी अ बिग ऑप्शन। क्योंकि यार लाइक वी हैव गिवन लुकाकू ऑन लोन, और पीपल हु डोंट नो, लुकाकू को एक्चुअली हमने भेजना चाह रहे थे फॉर एवर फॉर द टाइमिंग, दैट इज बेसिकली मल्टी ईयर लोन, लेकिन इटली में अभी सीरिया में मल्टी ईयर लोन्स अलाउड नहीं है। So that is the reason why you don't have that deal in place. लेकिन नेमार ऑन लोन डेफिनेटली इज एन ऑप्शन। हो सकता है वो लोन पे आए तो इवन न्यूकासल टेस्ट द वाटर्स ऑफ प्रीमियर लीग और एंड देन कैन मूव बैक और मूव ऑन, ये हो सकता है क्योंकि न्यूकासल आल्सो दे आर डूइंग अ मैडनेस। बट रियलिटी स्पीकिंग मतलब आई मुझे लगता है व्हाई नॉट बारसा नेमार ऑन लोन। ओ मैन बारसा फैंस, यू आर रियली गेटिंग सम प्लेयर्स है ना, इमेजिन। हाँ अभी तक आए नहीं है बट possibly. Big up to Solo, big up to the Man United agenda. They have a great channel of their own, so do check it out. Solo as well, and big up to Talk MU as well, brother. They are part of the Man United agenda and they do a lot of stuff, so do check them out. Big up to them. लेकिन हाँ, hopefully हम लाएंगे भाई. People, do you want European panel as well? Because काफी दिन हो गए European panel आए नहीं है. Let me know in the comments if you guys want. We used to do a lot of collabs. Do let me know. थोड़ा टाइमिंग थोड़ा वियर्ड होता है, थोड़ा सा लेट रात होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन वी कैन सर्टनली डू दैट। बट लेट मी नो अगर आप इंटरेस्टेड हो, नहीं तो वीकेंड में मैं ट्राई करता हूँ। व्हाट डू यू थिंक? अलॉन्ग विद ऑब्वियसली अपने इंडियन एंड हिंदी कंटेंट तो होगा ही, बट अलॉन्ग विद व्हाई नॉट दैट, राइट? अगेन को देखा आपने मैन यूनाइटेड फर्स्ट ट्रेनिंग? यस यस, एक्साइटेड लग रहा है। हेलो टू तन्मय, ऑलवेज गुड आप आए हो। और अगेन यार काफी लोग जुड़ गए इसलिए वापस से रिपीट करने वाला हूँ। सब लोग जो भी जुड़े ना, प्लीज प्लीज इट मीन अ लॉट अगर आप सब लोग बेल नोटिफिकेशन आइकॉन्स ऑन कर दीजिए फॉर ऑलमाइटी ब्लूज एफसी एंड ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस। यस मैं अकेला ही चलाता हूँ चैनल, बट आई वुड लाइक टू ग्रो द चैनल एंड फॉर मी टू बी एबल टू डू दिस फुल टाइम आई नीड योर सपोर्ट। यस आई एम आस्किंग फॉर इट because I genuinely believe there's a lot of hard work and a lot of input which goes into it, along with obviously chat ke suggestions. So bring on the suggestions, bring on the feedback, but do check out our short videos as well. And yes, we have started memberships and you can super chat hopefully on the other channel as well very soon. ये हाँ तो है ही। Okay. Harry Maguire is like finally a worthy opponent. Koeman is right. Koeman is right, really. Okay, interesting. I feel Kante can get near to his best. It could be a good signing. Okay, could be as a new signing. Well, again, it could be. Lekin, is it the right strategy from Chelsea, Manav? That is what my question is. Huh? I love Kante to bits. He should be there. Lekin, if you are relying back on Kante, I don't think हमारी transfer strategy सही है. Whether there was a strategy in place और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर थी तो why get rid of Bruce Buck? Why get rid of Petr Cech? I know we didn't get rid of Petr Cech, but at least we should have convinced them to stay in a full-fledged role even this transfer window, in my opinion. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो नी जर्क रिएक्शंस हो रहे हैं ना विद गोइंग फॉर हाईजैक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एवरीथिंग टॉड बर्ली एंड द कपल ऑफ पीपल अराउंड हिम आर डूइंग। वी नीडेड मोर पीपल हु आर बेटर प्रिपेयर्ड, हु न्यू क्या चल रहे ऑलरेडी काम। Do you think Barca should spend 50 plus million on Leva? If not, should they continue with existing attackers or go for someone else? Mayuk, in my opinion, Lewandowski is worth the money that Bayern are asking for. Period. ठीक है, I don't think age should come into picture. हाँ, you don't expect value for money यहाँ पर, you don't expect returns in terms of monetary benefits, लेकिन भाई वो he can arguably, I am going to say it, अगर लेवेंडोस्की आता है बार्सिलोना, I think that can be a difference between you winning La Liga or not. Trust me, at least you are going to compete very close if लेवेंडोस्की आ जाए और वहां पर you can make up some money. Imagine that. अंकित भैया हमें भी लाइव बुलाओ, जस्ट किडिंग। वेल Rugved knows what he's talking about. Koeman got sacked from Everton. How can he suggest that 4-3-3 possession based is not effective? Thank you, bhai Malav. Thank you for backing me. Absolutely. Koeman is total salty right now. Total salty. I don't want a player who doesn't want to. Okay, so Nippon is saying that he doesn't want a player who doesn't want to be, having Chelsea as a first choice. Nippon, okay, I agree. 100% I want that scenario, but let's be real. Okay, if you are a player, you are going to a club which has got a totally new owner. You have no idea how the club is going to be run in the next few months. Okay, you are a club which is known for player power versus a club which is also known for changes rapidly. Okay, you are a club which are two-time champions of Europe in the last 10 years. Of course, I have to say two-time Europa League champs, two-time Premier League champs, but right now in the Premier League are far from a winner. Okay, and you have a coach who is for some reason not as flexible as what he used to be in terms of formations, right?
On the other hand, you have Barcelona, where Xavi is right now ready to experiment. Xavi is wanting to play a lot of good football. You are has possibly आप stay करोगे claim to be in the starting 11. You have basically a chance of winning more silverware because वहाँ पर let's be real. As much as Atletico Madrid is good, and we'll come to Atletico Madrid as well. In La Liga, it is Real Madrid and Barcelona. ठीक है, दो ही है. यहाँ पर not just Liverpool, Man City, Spurs. Let me be very real. Spurs is time they have the best chance to win a trophy अगर they get things right with Conte. I know ifs and buts, but right now with the squad, I believe उनका pressure ज़्यादा होगा. And Arsenal को भी top 4 में आना पड़ेगा to improve. So that is what their challenge is, and Chelsea to sustain that, right? So in my opinion, you rather take the money and go to Barcelona and basically also have a chance of a Ballon d'Or if you're a great player. If you're not a great player, you can get to that level क्योंकि आपको ज़्यादा game time मिलेगा. So I think I'm not even spoke about history. I mean, let's be real. As much as we have history, especially last 3 decades, I know how much history we have. Even 5 decades पहले हमने जब जीता था, 6 decades पहले हमने जीता था, तब भी. लेकिन the fact is we cannot compete with Barcelona. The legacy that they have, that is a real thing. I don't like to say it, but that is a fact, hard fact. So very less players, unless आप fan हो. Lukaku was a fan, Nipun. Lukaku was a fan. Let me say this. ठीक है, Luke Shaw was a fan. मतलब would you take Luke Shaw? Luke Shaw is a Chelsea fan. Sancho is a Chelsea fan. Pogba was a Chelsea fan. ठीक है, काफी सारे होते हैं. But I don't think that can be your criteria. Of course, I understand you're not saying that, but at the same time, you want players who are firstly good on the pitch, who have proven in the Premier League. In my opinion, that's what Chelsea are going for. अब देखो, इसीलिए maybe we're not going with Koulibaly. Koulibaly, as per reports, is only what, close to 40 million. And talking about 40 million. Man City are expecting 40 million pounds for Nathan Ake plus add-ons. Can you believe that? Close to 50 million pounds. इसीलिए मैंने ये टाइटल रखा है भाई, क्लूलेस चेल्सी. As much as मैं खुद बोल रहा था कि नेथन आकी इज अ गुड स्टॉप गैप फॉर द टाइमिंग अगर आपको नहीं मिल रहा है आपके फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक्स, क्योंकि ही इज वेरी अडेप्टेबल. ही नोज चेल्सी, ही इज अ लीडर, ही नोज द एकेडमी, ही काइंड ऑफ नोज दैट प्लेयर्स. अगर डिलीट आए, लेकिन भाई 50 मिलियन एड-ऑन्स मिलाकर, इमेजिन भाई, चलो 45 मिलियन सोचते हैं. Really, if you're getting a Koulibaly versus Naki, any day you'll get Koulibaly. Lekin, are you getting Koulibaly? Maybe we are going for Premier League proven because things haven't worked for us. Things haven't worked for us with Thiago Silva is a different kettle of fish altogether. But it hasn't worked for us when it comes to what Werner, when it comes to what Ziyech, Pulisic even to some extent. It really hasn't worked for us. So why don't we go for premiership proven players is what Chelsea is thinking. मेरा ये लग रहा है gut feel. लेकिन again The Rock याद दिलाते हुए please like, share, subscribe and road to 5K. Brilliant comment that. Love such comments for sure. लेकिन हाँ, सब लोग implement भी करिए, बढ़िया रहेगा. I think Chelsea might get Edwards this season. Again, Michael Edwards अगर आ जाए, brilliant for the long run. लेकिन chances कम लग रहे हैं. I believe एक Man City, I don't know, Man City fans might correct me. मैन सिटी के एक ex Man City employee who was in the board. He is linked to Chelsea as well. I don't know whether it's for the director role, like one of the main roles as well. Okay, always find quality play and earn surplus and tuskers of Premier League. Other teams waste their money. Yeah, absolutely. Where will Asensio go? Asensio. Should Chelsea go for him? नहीं. I think the fact कि वो Milan से बहुत strongly linked था, but now that Ziyech might go to Milan. लेकिन you would also argue अगर हमें नहीं मिलते हैं Dembele और Raphinha, Ziyech might stay, ठीक है, and then Asensio will also stay. So kind or rather he will go to Milan, other way around, right? लेकिन अगर Ziyech जाते हैं Milan, then I think Asensio, I don't think a desperate situation है for Real Madrid to sell, because as per reports, Serge Gnabry might stay at Bayern Munich. What do you think about that, people? Imagine Serge Gnabry, Jonathan David, Sadio Mane, Leroy Sané, Musiala, Muller, पागलपंती भाई. बायर्न म्यूनिक चीप में लिए अपन मिडफील्ड और फॉरवर्ड्स, ग्रावेनबर्ग, गोरेट्स्का, किमिक. ओ बायर्न म्यूनिक फेवरेट फॉर द चैंपियंस लीग हो जाएगा तब तो मेरे लिए. लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, और बाय द वे लेवेंडोव्स्की अगर रहते हैं, इमेजिन दैट, वो तो नहीं होने वाला, बट जस्ट सेइंग. रफीनिया ने ये डिसीजन लिया क्योंकि चेल्सी और लीड्स की नहीं बनती. अरे नहीं, आई डिसएग्री. I don't think इतना सोचते हैं. I don't think इतना सोचते हैं players. They should. I would have loved to have players सोचता, in terms of the fan, in terms of the rivalry. इतना हाँ, they don't want to take so much hate on social media, वो होता है, लेकिन I don't think decisions are based on that. Let's play. ये मैं बोलता हूँ. Rifat Khan in the house, PSG fan. New direct contacts for Renato Sanchez in Milan. Skriniar will happen today. Yes.
और एज पर फेब्रिशियो पीएसजी जा रही है 4 प्लेयर्स के लिए, 4 new players including Renato Sanchez, Milan Skriniar, obviously they've got Vitinha and midfielder already, और एक और प्लेयर कौन मिस कर रहा हूँ भाई पीएसजी में और कौन मिस कर रहा हूँ, एक और प्लेयर फेब्रिशियो ने बताया था लेकिन मैं शायद किसी को मिस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मतलब लेट्स सी पीएसजी if they are able to get so many players or not. Renato Sanchez, Milan Skriniar looks very likely. I agree. Okay, fair enough, fair enough. Yes, Galtier was in the training ground. I did read it well. Thank you for sharing. Paperwork time. और Pochettino कहाँ जाएगा? People, let me know. Because Newcastle की अभी खाली नहीं है जगह. So I don't think it's going to happen anytime soon. Eddie Howe is doing well. ठीक है. So where will Pochettino go? Is there a place in world football जहाँ पर suits him? Conte is doing madness at Spurs. Eddie Howe is doing madness at Newcastle. आई डोंट थिंक अभी है जगह, मतलब इंटरनेशनली आप बोलोगे मे बी वेट टू द वर्ल्ड कप एंड गो इंटरनेशनली, अर्जेंटाइन टीम समथिंग लाइक दैट, पता नहीं. सिटी इन अपकमिंग वीक्स में पुट 68 मिलियन बिड फॉर नेमार. भाई कहाँ खेलेगा नेमार भाई? सिटी के बैकयार्ड में इतने कहाँ है जगह फुटबॉल की? प्लीज लेट मी नो. आर यू नॉट वांटिंग अ 100 million साइनिंग ग्रिलिश टू प्ले मोर फुटबॉल? Please, I would say as much as Neymar would fit him, it's a Pep signing proper. लेकिन at the same time, Grealish also is there for a reason. I think Grealish है, हाँ, maybe Alvarez लोन पर जाएंगे और हो सकता है Galacticos big time हो जाए literally. Excitement reaction if Chelsea and Inter meet in Champions League at Stamford Bridge, and that should be quarterfinals or semifinals. मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा. और यहाँ पर मैं चाहता हूँ प्रॉपर हो और हम दिखा दे भाई, लंका ढा जाएगी. That's what I would say. With Lukaku is like भाई साहब नहीं. I want to get rid of this guy big time and I want to teach him a lesson, man, if possible. Lukaku आप दिख रहा है मेरे एक्सप्रेशन में, this guy really frustrates me और भी ज्यादा. I really want, हाँ स्ट्रेन नहीं थोड़ा, I want Lukaku to do well at Serie A just for the reason कि भाई इंटर फाइनली कुछ पैसे पे कर रहे हैं हमें. Talks are that they might extend it by 1 more year next year, or then they might give 40-45 million. Really? Chiller. वो along with the inflation, what is 40 million 2 years from now? Would Arthur return to Barca? I doubt it. और यहाँ पर किसी ने मुझे कमेंट किया था भाई, बिग अप दिव्यांशु थे पता नहीं, तो मैं रीड किया था कमेंट दैट बेसिकली Barca might actually offer Trincao to Leeds. Imagine if that happens. Maybe that's a reality that इसीलिए maybe Raphinha is still thinking about Barca, right? हो सकता है. And yes, I hope we have gotten to the likes यार. मैंने डाला नहीं क्या? चलो ये अपना likes target है, 200 likes का target है. और यार 4.25 बोल रहे हैं, road to 5K definitely. But again, do check out both our channels. It is basically Almighty Sports Plus and Almighty Blues FC. It'll mean a lot. Certainly if you subscribe to both, doesn't cost a buck, but that bell notification icon, because हम काफी ज्यादा content करते हैं, not just who am I, we do at least 10-15 type of content on both the channels, if not more. Nathan Aki 10 to 40 max. Manik बोल रहे, okay, fair enough. And again भाई जो भी like share subscribe कर सकता है, in fact share कर सकता है, that will be brilliant so that we have more questions from other clubs fans as well. ओके की वजह से इनिएस्टा गया, प्यानिच और आर्थर का स्वैप हुआ, 3 प्लेयर्स पे वेस्ट 100 मिलियन प्लस भी. सुआरेज गया 8-2 से सब बिगड़ गया, पार्टी इंजर्ड रहता है, गोट भी गया, पैसा डेट वही अभी साफ कर रहे हैं. इतना पैसे लिया तो साफ करना बनता ही है ना. Aki is saying City won't consider selling less than 50 million JSK. Yes, I read that. मेरे ख्याल से अगर चेल्सी रियली इंटरेस्टेड है, we might just make a deal about 40 million plus add-ons and get him. ठीक है, वो लग रहा है मुझे कि अभी भी, क्योंकि यार फॉर व्हाटएवर रीजन Koulibaly स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं आ रहे. पाउ टॉरेज जो मैं चाहता था नहीं हो रहा, ग्वार्डियोल ने मना कर दिया. ही वांट्स टू प्ले फर्स्ट टीम फुटबॉल इन लाइप्जिग. और कौन है भाई, मतलब इतने मतलब लिंक्स भी नहीं हुए. किलमैन ऑफ वुल्व्स मे बी, कम ऑन, वी आर नॉट गोइंग देयर, राइट? Aki is still better than Kilman, तो हम जाएंगे Aki के लिए इन माय ओपिनियन. We are talking about left-sided centre backs. Right-side centre backs, we have Ligt, we have Kounde, options है अभी भी. तो वहां पर Ligt and Aki अभी भी है नंबर 1 प्रायोरिटी चेल्सी के लिए. और यही वापस से मैंने किया था शॉर्ट वीडियो ऑन Almighty Sport Plus. Please go and check it out. It's a short video, you will love it. Go and check it out for update there and my reaction. लेवा आने से ज्यादा खुशी लॉन्गले जाने की है. ग्नाब्री तो हर साल का है फुल स्कैम. ग्नाब्री एंड आर्सेनल नहीं, मुझे नहीं लगता. Imagine Serge Gnabry is playing proper Champions League football आज के दिन में. He can go up a level. He won't go down a level with Arsenal. They are playing Europa League. As much as Gnabry knows Arsenal, he maybe is friendly with a lot of them. But let's be real.
आई डोंट थिंक ही गोज देयर अनलेस भाई उसको कैप्टन बना दे और उसको बोल दे भाई तू जो भी है चेकबुक है तू लिख दे, कुछ भी चाहिए तुझे लिख दे, तभी जाएगा वो मेरे ख्याल से। कुंडे और कुलिबाली फॉर बारसा, मैं बोलता हूं अगर रफीनिया जाता है बारसा विच इज ऑल्सो लाइकली, हाँ मैं बोला हूँ ज्यादा लाइकली चेल्सी है, लेकिन अगर जाता है बारसा देन आई डोंट सी कुंडे गोइंग एज वेल, काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा भाई, तो देन कुलिबाली जाएगा बारसा, सो दैट्स व्हाई मे बी दे आर वेटिंग। Skamaka, Skamaka is PSG, yeah, PSG are going for Skamaka as well. That's a good one. Thank you for reminding me. Xavi is still new to management, and Skamaka, by the way, अच्छे player है for Sassuolo. Arsenal were linked before Jesus signing, लेकिन हाँ, अगर PSG जाते हैं, he can be a good backup. I don't think he starts, नहीं. Again, they might play 3-5-2, so I doubt if he starts. Xavi is still new to management. I agree, but let's be real. You know, okay, if you are even a player, मतलब, you remember Nipun, why did players come under Frank Lampard? Did they come for his management style? Did they come for the way he manages Derby? No. Come on. He was influential because he's Frank Lampard. And we're talking about Xavi here. Imagine what a player would feel like playing under Xavi. Again, you know it. I didn't like the fact that Xavi's team beat Chelsea 2009 the way they won against Chelsea. But the fact is, I have to put it, man. Xavi is having that legacy in football. He's one of the goats when it comes to midfielder, right? Along with Lampard. So I think players love to play for such people no matter what. Gerrard is also pulling people. That's the reason. It's not because of the management style, in my opinion. एक कॉल करेंगे भाई बस है, मतलब एक मिलता है भाई. Imagine like Xavi calls you and you have a chance to play for Xavi. Come on, that's what happens really. As much as Tuchel is also great in terms of management, but really players would probably go for players in my opinion. Just saying that unless आप हो Jose Mourinho or Pep Guardiola or Sir Alex Ferguson or in Arsene Wenger even, right? Kounde will be at Barca for sure as it looks. Well, Ankur, पैसे इतने पैसे कहां से आए? नो इकोनॉमिक लीवर्स, इतने पैसे कहां से आए भाई? आप बोलिए मुझे. रफीनिया, कुंडे, लेवेंडोव्स्की, रियली रियली वहीं पर 150 मिलियन प्लस एड ऑन बात कर रहे हैं अपन, वहां पर 250 मिलियन बात कर रहे हैं अपन, नहीं होने वाला इतना. Poch next Argentina manager. Okay, let's see. Depends on the World Cup, of course. Let's see. Neymar will play at left wing. So Grealish, super sub, is it? Is what I'm assuming because their second season Greenish ka 100 million. I know 100 million was just a clause, like at the end of the day there is pressure as well, or not just pressure. He would want to play. Chelsea can have Koulibaly. Ankur, I wish we get Koulibaly, लेकिन नहीं होने वाला, मुझे नहीं लग रहा ये, क्योंकि for whatever reason हम नहीं जा रहे इतना close. लेकिन हाँ वही है, हमें मिलने वाले second choice for whatever reason, and then we'll have to bet them in the team somehow. And Thiago Silva helps, like मैंने बोला about Lampard and Xavi. Thiago Silva and Chelsea helps. I can buy that for sure. Pochettino to Newcastle will be good. लेकिन वही Eddie Howe, will he get sacked in midway? I don't think so. I think Newcastle will probably do well this season. And yes, people, come on, let's like the stream. एक thumbs up का बटन है, दबाइए, और वहां पर ज्वाइन करने का ऑप्शन है, अगर आप कर सकते हो, brilliant. Do check it out at least give me a chance and see कि क्या options है. And then maybe आपको लगता है कुछ feedback दीजिए, मुझे DM किए Almighty Blues FC on Instagram, Twitter and on Facebook. And also do check out Almighty Sports Plus. ठीक है, वहां पर भी we are very close to getting monetized, so hopefully we'll get there. And यहाँ पर अगर आप सुपर चैट्स करो तो we'll go back to the channel investment, लेकिन हाँ नहीं भी करो तो great that you're here. I saw Depay may be offered in Raphinha deal. Okay, Depay का मुझे डाउट लगता है. I personally feel may not be. हाँ, again आप बोल सकते हो there is unfinished business and what not, but come on, for me he never fitted in the Premier League. रियल में बोल रहा हूँ, मैं डच फैन हूँ, आप जानते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता लीड्स यूनाइटेड में द वे दे प्ले मे बी, हाँ दे आर नॉट प्लेइंग एज दे यूज्ड टू प्ले इन द बीएलसा, तो मे बी नॉट. आई डोंट नो, आई एम इन टू माइंड्स. बैमफोर्ड, डिपाय, दोनों आई एम नॉट श्योर. ओके, व्हाट अबाउट नेमार टू चेल्सी? मानस मैंने ले लिया ऑलरेडी, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन. Okay, you will see a blockbuster season with Tuchel in the touch. Like, mark my word, just don't see the money go for the performance in future. Okay, fair enough. मैं तो तैयार हूँ भाई नेमार, लेकिन आई डोंट नो इफ चेल्सी आर वांटिंग टू डू दैट. आई थिंक स्टर्लिंग हो जाएगा, लेट्स बी रियल. स्टर्लिंग विल हैपन. आई थिंक इट्स अबाउट 50 प्लस, आई थिंक एड ऑन, सो क्लोज टू 60 मिलियन हो जाएगा यार. स्टर्लिंग हो जाना चाहिए, लेट्स बी ऑनेस्ट. यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू विल प्ले ऑफ वन डे, हैव अ गुड डे. अरे आदमिया, बिग अप भाई. मतलब it's not about just hard working. Again, I would love the fact that if you actually go over what I speak and what I've spoken over all my videos, I really appreciate that comment. But at the same time,
It's my passion, which I hope it comes out and you relate to it. आप relate कर सको, आप कुछ जान सको उससे, और at the same time entertain भी करते हैं भाई. काफी basically हम videos edit करते हैं, काफी games भी खिलाते हैं, और भी games आने वाले हैं, not just on this channel but on Almighty Sport Plus. But धीरे धीरे आएंगे और भी, with your support we'll get there. But yes, definitely need that bell notification to be on if I'm not wrong. We need Spurs Ultra Guruji thoughts. Vamsi, yes. यार गुरुजी को उसी दिन मैसेज किया था भाई, थोड़े बिजी थे if I'm not wrong, तो he couldn't come that day. लेकिन हाँ, कोई नहीं, we'll get गुरुजी soon. Danjuma hijack Sterling deal off. शशांक, अच्छा Danjuma I don't think so. मैं बता रहा हूँ क्यों. हाँ, बोलोगे Sterling is not as direct as he used to be. लेकिन हमें चाहिए someone who's much more direct in terms of basically someone who can dribble as well. ठीक है, Danjuma I don't see him that way. हाँ, he is a great player. फिजिकल एलिमेंट भी है डांजुमा का, तो काफी अच्छा अपग्रेड होगा फॉर वेस्ट हैम ऑन द विंग्स, एब्सोल्युटली ऑन द लेफ्ट विंग. लेकिन समवन हु कैन प्ले अ स्ट्राइकर एज वेल, तो डांजुमा आई थिंक इज अ गुड शाउट फॉर वेस्ट हैम. हमारे लिए आई थिंक वी ऑलरेडी हैव से हैवर्ट्स. ठीक है, तो वी नीड समवन हु इज बेसिकली एबल टू क्रिएट फॉर हैवर्ट्स, समवन हु इज एबल टू टेक ऑन डिफेंडर्स डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ ड्रिबल्स. तो इसीलिए हम जा रहे हैं डेम्बेले, स्टर्लिंग, रफीनिया ऐसे प्लेयर्स के लिए जो काइंड ऑफ कैन डू बिट ऑफ बोथ, स्पेशली स्टर्लिंग. Leva could contribute to short CS as well. Also, Benz versus Leva could be marketed as the next big rivalry, which is La Liga. Yeah, definitely, Manav. Great point वहाँ पर. लॉन्गली उठती थी लाइब्रेटी जाते है नहीं. अगर आके गया तो गया पाउ टॉरेस के लिए. सिटी एंड रिपोर्ट्स इन इटली सेज यूवेंटस सिटी टू गो फॉर डिलिक्ट. ओके, सो बेसिकली मैं देख रहा था यूवेंटस फैंस वर काइंड ऑफ कमेंटिंग कि उनका प्रेफरेंसेस क्या है. मतलब आई नो दैट दे आल्सो वांटेड पाउ टॉरेस, सो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वेयर पाउ टॉरेस गोस. डिलिक्ट लेकिन लग रहा है आएंगे यार, डिलिक्ट आएंगे. वो हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन डिलिक्ट लग रहा है, स्टर्लिंग लग रहा है. आकी का देखते हैं, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द फी, लेकिन हो सकता है बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनीवन लिटरली and you're trying to hijack. Maybe we'll just get tempted for Aki or pay another $5 million. Delict is very overrated. Even Tomori is way better than him. Rather than spending 100 million on Delict, wiser options to bring back Tomori. Well, JSK, मैं बोलता हूँ दोनों एट पार है, बहुत ही डिफरेंट एलिमेंट्स है दोनों रखते हैं. आई थिंक टोमोरी एंड डिलिक्ट का क्या पार्टनरशिप होगा, जस्ट इमेजिन फ्यूचर के लिए. लेकिन आई काइंड ऑफ गेट इट व्हाई डिलिक्ट ले जा रहे हैं. डिलिक्ट इज द काइंड ऑफ एक ilk of player है जो Chelsea has been missing, right? As in, I know I might say big words abhi, but the fact that we haven't really, like, we try to replace Cherry with a Cahill over the long run. ठीक है, वो नहीं हुआ. लेकिन Cahill also very good. Now even Cahill, we have not replaced Cahill. Have we replaced Cahill really? That kind of a player who's that that's वो strength रखता है, someone who can head the ball well, someone who's basically a good reader of the game as well. तो मेरे ख्याल से you can play in different formations. I think Delict can be that guy on the right hand side. Why not? So Tomori, as much as he's brilliant, like Delict, he also has mistakes in him. तो दोनों at par रखूंगा मैं, if I'm being real. हाँ, maybe Tomori on form, but on ability, I've seen Delict as well lots. मैं बोलूंगा दोनों ही at par रखूंगा. And I agree with you. We shouldn't have let Tomori go. वो तो mistake थी, लेकिन again, hindsight is a beautiful thing, right? As I say. Again, मैं कुछ skip करने वाला हूँ. ओके, स्पोर्ट्स अपडेट्स इंटरेस्टिंग. यस, मैंने देखा है. बिग अप टू मैड्रिड पंडित्स भी, क्योंकि उनका था वीडियो, मुझे याद है. देन यस, वी हैव यूजिन इन द हाउस. Eugene, a Spurs fan, big up to Eugene. Eugene, how are you doing? And of course, do check out Spurs Vision TV as well. Lekin, Eugene, all the best. Congratulations. Jealous I am, big time. It's for a change. Daniel Levy is backing Conte, so you cannot do a Levy out for some time for sure, right? Xavi's system is a hybrid of Pep and Luis Enrique, like possession-based as well as if times comes counter-attack. Yes. Lekin, coming back to Eugene, what do you think, Eugene, about Harry Winks going away to Leicester and Tielemans coming in? Do you think it's a bit too attacking, or do you think it's only better? Like, come on, you can definitely take Tielemans, or do you think it's too much to manage for Conte? And again, The Rock, thank you. Lakaka is best player in the world. Anup is a pun. Come on, man. You were reading all comments and I was patiently waiting for my turn. But when my turn came, you skipped my comment. Are you lost, boy? Sorry for that. I am sorry. But I don't think I read every comment. I am skipping a few comments. But the fact is, I try and read as much as possible. But again, if you would like to prioritize your comment, again, I'll try and pick the ones that I feel are relevant, or sometimes as a human, I might miss some. So please excuse me. लेकिन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर द कमेंट. एंड इन केस आप हो अभी तक,
तो brilliant. अगर नहीं भी हो तो hopefully you realize that I've read your comment finally. But again, do let me know what your comment was. I'll come back to it. And like I said, there's always a super chat option. अगर आप afford कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो I'll try and take as much comments as I humanly can. ठीक है? So let's give me a benefit of the doubt as well. But I don't have anything against anyone. I love you all. My head will blow up if we go for Nathan Ake for 50 million for backup. अच्छा, अभिषेक यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करूंगा. अगर नेथन आके आएंगे 50 मिलियन में, वी विल बी फोर्स्ड फर्स्टली टू प्ले 3 इन द बैक. ठीक है, मेरे ख्याल से होने वाला है. वो एक गलत पॉइंट है, दैट आई एग्री विद यू. सेकेंडली, अगर वो आते हैं 3 इन द बैक खेलते हैं, 100% ही स्टार्टिंग. बिलीव इट और नॉट, ही स्टार्टिंग इन मोस्ट मैचेस. ही स्टार्टिंग लेफ्ट सेंटर बैक, नहीं तो ही विल नॉट कम. If he does not start in the 3 in the back system, why is he coming to Chelsea? That's my first question. This is just not for the money of Man City. ठीक है, Man City is not a club जो जिनको चाहिए इतने पैसे. So I think it's a clear case of him wanting to play in the World Cup starting 11 of Netherlands. ठीक है, इसलिए वो आ रहे हैं. लेकिन काफी ट्वीट्स मैंने ये भी देखा. Big up to Mikhail, my brother. So a lot of people in the Twitter world I have discussed with. तो I feel that a lot of people are thinking, भाई वो अगर बैकअप होने को तैयार है तो चेल्सी आ रहा है, तो it's not the right attitude as well. Just like हम बोल रहे हैं, जैसे Raphinha comes as a backup to Chelsea, like, you know, saying Chelsea is my backup plan, it's not a good deal. Even maybe for Ake, it's not a good deal. अगर वो आ रहे thinking that he'll be a backup at Chelsea. I know different, but kind of similar, right? Having said that, अगर हम 2 with the back system खेलते तो he will definitely be a backup. लेकिन 3 with the back system खेलते, मैं बोल रहा हूँ he'll start. और कैसा वो अपग्रेड होगा चेल्सी के बैकलाइन में, मैं बोलता हूँ कैसे, बिकॉज वी यूज्ड टू हैव लास्ट सीजन में, आप बोलोगे सब लोग फिट होने पर कौन थे फॉर स्टार्टिंग 3? रूडिगर, थियागो सिल्वा एंड एस्पिलिक्वेटा, राइट? दैट वाज द स्टार्टिंग फ्रंट 3 फॉर अस. एस्पिलिक्वेटा वाजंट सो गुड, लेट्स बी रियल. थियागो सिल्वा ग्रेट बट नॉट वीक इन वीक आउट. रूडिगर फैंटास्टिक. अभी होंगे पोटेंशियली आवर सेंटर बैक विल बी नेथन आके, थियागो सिल्वा एंड Ligt. तो क्या आप बोलोगे it's not arguably kind of at par with last season? Think about it. Neymar at City might not happen due to his off the field antics, but again, Manav, the only thing about him is if he comes to Premier League, I think Tuchel has a thing over him. And of course, Neymar, the fact that he has such close connections is not wrong to Messi. Maybe Pep convinces him as well. You never know. लेकिन वही है, how much of playing time will Grealish get in? I'm really doubtful about City. अगर होता है तो who knows, man. Long to Spurs, here we go, 1 year loan. Yes, Tejas, absolutely, हमने share किया है. And but again, he won't start. He'll probably rotate, but good rotation option for sure. Okay, Serie A next season, would Juventus get be on par, or one of Milan club will win with Inter getting Lukaku and Juventus going for Di Maria would increase Juventus chance? Okay, यहाँ पर genuinely Anup, I believe that अभी भी Juventus has a lot of business to do. तो डिपेंडिंग ऑन दैट मैं बोलना चाहूंगा मिलान हैजंट इवन स्टार्टेड द बिजनेस. तो देयर विल बी टाइम जब मैं चेंज करूंगा, लेकिन अभी के लिए लग रहा है इट विल बी वन ऑफ द मिलान क्लब्स. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यूवेंटस हैज नॉट प्लेड एकजुट टीम के साथ. आई नो काफी लोग इंजरीज के बाद में आ रहे. किएजा, टॉक अबाउट हिम, maybe you know McKennie, he is also one great midfielder in my opinion. काफी potential रखते हैं the US international, but in my opinion it will be Inter Milan and AC Milan, क्योंकि AC Milan have a madness with Tonali, with Rafael Leao in the house, with Tomori हम बात कर चुके हैं, with you know Theo Hernandez. They have a set of brilliant players, but they have to keep them fit. They have to keep them in AC Milan, and they have to keep Giroud fit as well as, you know, make a couple of signings. क्योंकि कैसे चले गए याद रखो. इंटर मिलान अगर दिबाला कम्स ओवर द लाइन, वो पता नहीं क्या ही तो हो गया भाई. दिबाला निकल गया क्या, पता नहीं. अभी काफी यू नो इंटर लुकाकू में कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, लेकिन अभी लुकाकू चले गए और सडन से ही इज सेइंग दैट man, I'm here to score goals, man. I'm here to score goals. That's what I do. I keep my promises. Whatever shit, man. Anyway, once De Jong is sold, Raphinha will go to Barcelona. Eugene has a point. मैं वही बात करता कल सादिक भाई से, ब्रिलियंट. बट who will be sent back in Juventus if Ligt leaves? हाँ, तो they are possibly going to be hijack का सीजन है भाई. It's season hijack. They are going to hijack Bremer. Yes, Bremer जो थे defender of the Serie A last season, he might actually move from Torino to Juventus क्योंकि it's in Turin. He might prefer to Juventus. Who knows? Right? That might be a possibility. Watch out for this. अगर Bremer नहीं आते, they might put in some money. पैसे मिलने वाले उनको भाई. Maybe they'll get Timo Werner or Christian Pulisic. I prefer Werner going along with De Ligt coming this side or Pese going that side. So maybe they will invest in Pau Torres. Who knows? Or yes, The Rock बोले like Thoko,
लाइक ठोको ब्रिलियंट, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए हो चैनल पे। और कमेंट करिए, शर्माइए मत। आई विल ट्राई एंड टेक एज मच एज पॉसिबल। नहीं होता तो सुपर चैट्स है, मेंबरशिप्स है, काफी चीजें, काफी एक्टिविटीज on both our channels coming up. Liverpool is getting assembled on 5th of July for pre-season. Klopp has few more target players to buy. यार शायद आप बोलिए भाई, क्या लगता है आपको? What do you think शायद about basically Liverpool? Like, do you think कि यार इतना criticism हो रहा है about FSG and all that, is it fair or not? I think यार Liverpool fans disappointed है कि यार आप लोग लीग नहीं जीते हो recently, but I think you've done fantastic for Champions League final and all that, नहीं? 2 cups recently. और बिग अप टू द लॉस्ट बॉय। यस, मैं सोचा भाई लॉस्ट बॉय खो जाए नहीं, बट लॉस्ट बॉय हैज बीन फाउंड एंड इज कम बैक। थैंक यू, नो वरीज। आई वाज आस्किंग अबाउट Raphinha's latest update. You see him coming to Chelsea. Oh yes, lost boy. I think I know why he skipped in. Probably वो क्वेश्चन ना बहुत बार आ गया था, so I'm like, okay, let me not repeat the question because the content kind of gets repetitive for the crowd, right? वही रीजन था। लेकिन the fact is I'm giving him 60 to 65% चांस। हाँ, हमें 60 or 65 million देने हैं if he agrees. 5-year deal is what we've gone for, but as per reports, as per latest reports, जो personal जो contract terms है ना, वो भी better है than Barca's terms. लेकिन the fact is अभी वो क्या चाहता है ना, it might just come to that. So maybe Deco, being a person who has played for both the clubs, especially more at Barca, might actually convince Barca. तो लेकिन अगर वो होता है, like we heard, they might sell De Jong, which is going to happen as well, and they might use it for Raphinha. तो लग रहा है इधर वे, लेकिन मुझे लग रहा है अभी पलड़ा भारी चेल्सी का ही है। as much as media is saying otherwise, मुझे लगता है चेल्सी का पलड़ा भारी है। हाँ, चेल्सी फैंस नहीं चाह रहे, क्योंकि some fans, not all, because he's openly saying, or as per reports, he wants Barcelona. लेकिन is not saying that he does not want Chelsea, ना, तो वो नहीं है। तो I think there are two different things. But thanks for the super chat, lost boy को big up definitely, and all the members as well for sure. And yes, people, let's get in the likes. Come on, likes में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है, for my health and for my channels and for the support I get from you all and for love as well. Nathan Aki can play left back as well, right? Yes, he can. लेकिन I don't consider him really as a left back. हाँ, he's an upgrade on Malang Sarr as an option for sure, without a shadow of a doubt. But I don't consider him as a left back. I consider him really as a left centre back. I would say he has not played enough in a double pivot left central defensive midfielder. I think that is the position. I don't know people, 2014 में एक गोल था, मुझे याद आ रहा है, एक हॉलीवुड पास किया था टू एडन हजार्ड। एडन हजार्ड ने ब्रिलियंट टच किया और he just moved left and then bang, goal. I think आर्सेनल के साथ था क्या? Correct me if I'm wrong. लेकिन what a ball, man. What a ball. That is something that Nathan Aki could do from defensive midfield, from left centre back. He has that ability. Wings needs to leave. If we get Tielemans, Arsenal fans will explode. It's all about hijack, man. Eugene, it is a season of hijack. We are playing hijack all the clubs. That's what is happening. Hello to Lou Manu, always good to see you. Okay, यहाँ पर I feel Raphinha might be expensive for Barca, but if Xavi thinks he'll be a key player in the system, it is not too bad. And for Raphinha, Barca will be his dream move. 100% agree. What a comment that. Okay, what's your view on Tite's statement about Neymar, Vinicius? Any manager playing Neymar in wings currently, I will call him donkey. Arey, I didn't read that. Vinicius is the Neymar of 2014. Wow, what a comment, bhai. Matlab, maybe that is why, I don't know, PSG, are they going 3-5-2 under Galtier for that reason? Is what the comments are. लेकिन at the same time, he's leaving PSG. तो थोड़ा strange है. Like, मुझे नहीं लगता भाई, मुझे लगता है Neymar, Grealish kind of people, I know I'm putting both of them in the same bracket, लेकिन I think the fact कि यार they can really take players on, I really believe अभी भी है Neymar में, तो करना चाहिए. You should use that attribute of him. He's not your prolific goal scorer, so you rather use him on the wings. That's my opinion. He creates a lot for the team. Okay, but you need someone who finish. Okay, Michael, I have been messaging literally daily. Fateh, yeah, he was unwell last week, so let me send him a quick message. But yes, definitely, Michael and a couple of other European, as in content creator, I'm definitely open to. I am in touch, so we are getting Michael hopefully early next week. Long and spans soon. Okay, yes, I feel it harsh to troll Lukaku all the time. Even now, it's yes, one pathetic season, but he has done well in the past and in international. By the way, what's next for Ligt? Well, Kishore Creations, मैं agree करता हूँ भाई, लेकिन यार आप यहाँ पर आके नाटक करके वापस चले जाते हो, वो भी 90 नंबर का जर्सी लेते हो, ये दिखाते हुए कि यार 90 मिलियन का बेसिकली प्रॉफिट हुआ है. इज इट फॉर रियल? मतलब आई नो मे बी आई एम रीडिंग टू मच, मे बी आई एम ओवर रिएक्टिंग, लेकिन यार कहीं ना कहीं तो यार सब चीज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना.
It is not a coincidence. And his attitude, his way of giving interviews, I know आप नए क्लब में जाकर बुरा नहीं बोलोगे, you will speak about doing well, but एक जो एक होता है ना, मतलब क्या ही बोलो यार, एक अजीब सी बेसिकली एक प्राइड है, एक अजीब सी बेसिकली एक एक I don't know, I'm not getting that right word, but he has a sense of, I don't know, एक overconfidence, or what you say, something is there in his face. I can just make it out. I might be reading too much, but maybe it's what he has given to Chelsea. He has left Chelsea in tatters. Let's be honest about it. Even in the transfer window, I agree there was a new owner in place. I agree. Okay, there were a lot of other issues with Tuchel's personal issues, a lot of other issues with other players as well, contract issues. Okay, Marina, lot of issues. लेकिन भाई जो लुकाकू ने किया ना, मैं बोलता हूँ लास्ट सीजन में भी मिडवे थ्रू द सीजन व्हाट ही डिड डिरेल द सीजन, वी वर टॉप ऑफ द लीग बिफोर दैट अपार्ट फ्रॉम इंजरीज, एंड दिस टाइम जो हुआ है, पहला आते ही बेसिकली बवाल मचा दिया। टॉड बॉली भाई पहले 2 हफ्ते वेस्ट चले गए, मैं तो बोलता हूँ। हाँ, ग्रेट रिडेंस, लेकिन वी कुड हैव डन मोर बिजनेस इन दैट टाइम, राइट? ऑल होप लाइक मैन यूनाइटेड फेथफुल्स। Lumanu, well, for people who know me, especially you, like, see, I am one of the most positive guys out there, what I would like to say in terms of footballing and Chelsea stories. But the things which are happening right now, it's not often that Spurs beat you in the transfer window so much and by a distance. That's the real thing, and that's the real thing I'm saying. Spurs beating us like by a distance in the transfer window, by a distance. Sorry, Spurs fans in the house. Nothing against you, but you can feel it. You probably feel the same about Chelsea all these years, right? Mourinho is friendly with players, which makes him better than Ancelotti. Oh, okay, interesting, interesting. And then I mentioned you in Insta post. Please check now. Thank you, bro. Thank you. Syed is a hero, man. Syed is an absolute gem, and big up to Syed for doing that. लेकिन मुझे मिला नहीं शायद। कहाँ मैसेज किया आपने? हीरो हीरो बोल दिया, पर मुझे तो अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। मे बी इट्स माई इंटरनेट, और मे बी इंस्टाग्राम, एंड अगेन पीपल डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, on Twitter it is Almighty Blues FC, and yes, we are a fan channel for all to see. Again, big up to Syed as usual. Juventus should hijack, oh okay, interesting, काफी अच्छे तन्मय स्काउटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। Good on Tanmay. Let's see. If Ligt leaves for Chelsea, can Juventus buy Koulibaly? Yes, Koulibaly is also targeted by Juventus. मैं भूल गया। Man City asking 55 million for Aki. 50 million is the price. लेकिन हाँ, 40 million Koulibaly बेटा, 100% Vijay, cannot agree with you more. लेकिन would I take Aki? In a heartbeat. In a heartbeat I would take him. क्योंकि अभी यार we literally have, जैसे मैंने बोला, मलंग साथ, Thiago Silva, Chaloba, because Colwell hasn't played first team football, senior football for us. नीदर है एम्बायामा। और कौन है भाई? एस्पिलिक्वेटा का तो कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं क्या हो रहा है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। व्हाट अबाउट बुंडेसलीगा टाइटल्स लाइक टैलेंट्स लाइक इंडिका? या इंडिका हैड इट ब्रिलियंट इन यूरोप। शॉटरबैक, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज ऑलरेडी मूव्ड। ठीक है, तो शॉटरबैक इज ऑलरेडी मूव्ड, लेकिन इंडिका डेफिनेटली इज अ गुड शाउट। बट बुंडेसलीगा से लाना वापस भाई, क्वेश्चन मार्क। आई नो रिसेंट बुंडेसलीगा साइनिंग्स। What about Zaniolo links with Juventus? Do you think he would start or be a backup? Okay, into PS. Well, Zaniolo would be brilliant. If अगर आया तो brilliant है, लेकिन I don't think वो होने वाला है. I don't think. क्योंकि I think they have a lot of people in midfield as well, right? तो मुझे लगता है वो doubt है, लेकिन maybe they are planning to get more attacking flair as well, along with playing the ball from the back. Who knows? Then maybe he's a good player. Spurs did some business under everyone's nose. Yes, people, for whatever reason, we have not gotten enough likes, I believe. यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कितने likes आए हैं. I think, okay, so yes, people, we are just over 100. We need to double this number. तो जल्दी से double कर लेते हैं. Just the press of a button and let's get in more people. City bought Aki for 40 million, will demand 50 million. लेकिन he has played a couple of seasons with him. That is the difference. He has played a couple of seasons. आप argue कर सकते हो, he has been instrumental in the league title as well last season. Okay, he came in, it was the second half of the season, काफी matches में, in my opinion. So I think he has kind of paid you back that extra 10 million. तो 40 million में दे दीजिए विनय। वो भी मेरे ख्याल से ज्यादा है। मेरे ख्याल से 35 million is what Chelsea are wanting to give at max, and they are wanting, I think, with add-ons equal to 50 million. तो बीच में कर दो भाई, 40 million में दे दो। If Chelsea do have a scouting team, if they have, or they just jump on transfer rumors and hijack deals, what was the need for the last issue to hijack us? Exactly, man. That is why people wondering why have I lost hope for a change, and that is why
लाइक सीरियसली मैन, आई नो एक होता है भाई आप अपने कंपटीशन को काटते हो, ठीक है, इसीलिए आप रिचार्लिसन नहीं जाने दे रहे हो स्पर्स, आई अंडरस्टैंड दैट, बट भाई 50 मिलियन, 50 मिलियन। Okay, हो गया. Nathan Ake is a player of limited abilities. To be honest, he's a hard-working player, but isn't a day in day out four-man backline. Yeah, not in a 4-4. I agree. Four at the back खेलना है तो भाई Nathan Ake will be a core DM. He can play a core DM. In my opinion, he's not been tried much. पता नहीं वो खुद नहीं खेलना चाहते और whatever he sees him as centre back after he grew up literally he has played only centre half. I think Bournemouth was a team which kind of played him only centre half and तब से बन गए centre half. In my opinion, he is also a DM. I really used to like him, man. For whatever reason, he's not played enough. And by the way, he's also an upgrade on Ampadu. For people saying, Chelsea fans saying, "Bhai, we have an Ampadu." Ampadu Ake ka, as much as I agree with Mana's comment, bhai, Ampadu or Ake you cannot even compare. Okay, Ake is a natural left footer. Ake is a Dutch international versus a Wales international. Far difference. Let me be very honest. Okay, someone who's actually played in Man City, been part of winning squads in recent times. Someone who was the main player for Bournemouth, main player, and I mean it. Okay, so I think he has his limitations. 100% agree with Mano, but in a particular system, he can play well. He can play. He can do a job. If Chelsea going for a winger, why not Berardi? Arey bhai sahab, I hope we don't go that way, bhai. Lot of better wingers out there. Lot of better wingers. Suman, I doubt. Broha transfer. Oh yes, उस पर बात करनी है भाई. वेस्ट हैम, ओके, तो एज पर रिपोर्ट दंजुमा का जो 40 मिलियन था ना, वेस्ट हैम आर ओके टू पे, बट प्रॉब्लम इज दैट वेस्ट हैम आर नॉट विलिंग टू गिव हिम द सैलरी और द लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो मांग रहा है, और मे बी द रोल इन द टीम, वन ऑफ द थिंग, राइट, पर्सनल टर्म्स नहीं अग्री हुए विद दंजुमा. तो Fabrizio has said that they are okay with it. They are okay because Moyes का first preference क्या है? Armando Broha for Chelsea. भाई अगर वो डेक्लन राइस नहीं दे रहे ना तो क्यों देंगे भाई हम ब्रोहा को? I know it doesn't work that way. You need to get rid of players as well. But the fact that we have gotten away with Lukaku, अभी gotten rid of him rather, तो हमें चाहिए एक बैकअप स्ट्राइकर. ब्रोहा नहीं चाहते बैकअप होने के लिए, भाई कन्विंस करो उसको 6 महीने के लिए, कन्विंस करो जनवरी तक रहे एटलीस्ट, तब तक विल गेट अ बेटर स्ट्राइकर. सो आई वुड से ब्रोहा ट्रांसफर वैल्यू, मैं बोल रहा था मे बी डेक्लन राइस मिलता है, आई वुड गो फॉर 70 मिलियन प्लस ब्रोहा, गेट डेक्लन राइस, दैट्स इट. ठीक है, तो आई वुड से मे बी 20 मिलियन 25 मिलियन मे बी, दैट इज व्हाट हिज फेयर ट्रांसफर वैल्यू वुड बी. आई माइट बी रॉन्ग लेकिन दैट्स व्हाट आई फील, बट with a buyback clause अगर हो सके तो that's what you want, because Broha is the poor man's Diego Costa, the poor man's Richarlison, आप बोलोगे in a way, but he has a higher ceiling for sure. I don't think we should give him to West Ham without taking a player back. I genuinely believe that. Unless they pay 50 million, which is not going to happen. And yes, definitely like Cardolondo, it helps a lot. Ake is good in the air and his track back pace is underrated. In UCL, he has dual pace with Lorente in and won the ball. Yes, exactly. When a very good point. लेकिन एक और चीज मैं बोलूँगा, he's good in the air. लेकिन the fact that he's not as strong as what he kind of can be. You know what I mean? Physical strength में काफी, just like a Christensen used to get beaten, he is beaten at times. So वो है liable थोड़े. So that's why I agree with Manav as well. Neymar plays very well as a false nine in the Brazilian system. I feel Tite was talking about that. He was a good vision. He has a good vision and final forwards who tuck in while playing for Brazil. Fair enough. ठीक है, I know that Neymar and Richarlison kind of rotate at times, वो भी होता है in terms of positions, in terms of starting plays. Lukaku thinks he's the best. Yeah, he thinks he's the best, but he's far from it. Absolutely. यहाँ पर मैं मिस कर दिया कमेंट, वापस से जाने दो. आई नो ऋग्वेद, मैंने किया है आपका कमेंट स्किप, लेकिन बिग अप टू ऋग्वेद एज वेल, सुमन एज वेल. Slaughter back to Madrid, why not? Lekin abhi it's too early. Come on, you cannot just have like a couple of good seasons and expect the best thing, right? Abhi he has to prove a little bit more. Next season top 4 prediction. Okay, early prediction hai. People don't clip me. Early prediction hai, and I know things will not be right, but as things are going, जो चल रहा है, pains me to say it, Man City to win the title again, Liverpool to come second again. Yes, you heard it here. Spurs a close third and Arsenal fourth. Yes, you heard it there. Arsenal fans खुश होंगे आज तो बहुत, लेकिन भाई डोंट वरी, चेल्सी हमने करना है भाई, 2 साइनिंग्स करने हैं अच्छे और आ जाएंगे. अगर स्टर्लिंग हो जाता है और एकी या कुलीबाली में से एक हो जाता है, आई थिंक वी आर एटलीस्ट गुड टू कम फॉर टॉप 4. मैं बोलूँ
Rabiot, yeah, मैंने सुना था, मैंने कवर भी किया था earlier transfer stream से, but I don't think that Rabiot is the kind of guy that we need right now. हाँ, if we get rid of maybe Jorginho or another midfielder, maybe yes, लेकिन मुझे नहीं लगता हमें चाहिए really. We have players who can kind of do a job वहाँ पर. We have Gilmore as well coming back. I know he's not nowhere close to Rabiot. Rabiot can play multiple positions. थोड़ा cam भी खेल सकते हैं, थोड़ा DM भी खेल सकते हैं, number 8 भी खेल सकते हैं, number 6 भी खेल सकते हैं. लेकिन आई बिलीव, और अभी तो लास्ट सीजन भाई अंडर एलेग्री विंग में भी खेले थे, लेफ्ट विंग में भाई साहब को क्यों ही तो खेले थे. बट द पॉइंट इज दैट ही इज मच मोर अडेप्टेबल एंड मच मोर एक्सपीरियंस्ड. ट्रेन टुकल इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर अ शॉर्ट पीरियड, लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम देयर वर रिपोर्ट्स कि यार देयर माइट बी सम रिफ्ट बिटवीन टुकल एंड राबियो, देयर माइट नॉट बी, थोड़ा मिक्स्ड रिपोर्ट्स है. तो आई थिंक चेल्सी मे नॉट गो, मोर सो बिकॉज हमारे पास है काफी प्लेयर्स. हमारा नीड क्या है ज्यादा, हमारा नीड है प्रॉपर कोर डीएम. अगर हम जाते 4-3-3 सिंगल पिवट के लिए, और डेफिनेटली हमें चाहिए 2 सेंटर हाफ्स और एक विंग बैक जो होने वाले हैं जॉनसन क्लॉस, लुक्स लाइक इट नॉट फॉर्च्यूनर डेस्ट, एंड we'll maybe keep Emerson at left wing back, right? Up front we need a couple of people as well, one striker, one winger. यहाँ देखो स्पर्स फैंस फुल फॉर्म में. Wow, wow. Quad. I know this is joking, Eugene Big up. स्टोरी में टैग किया है यार, मुझे आया नहीं भाई, फॉर वॉट एवर रीजन मुझे आया नहीं है. कोई नहीं, तो थैंक्स अलॉट यार, आपने किया तो. अच्छा अभी दिख रहा है. Yes, yes, Chelsea are waiting for Raphinha's answer. Been told Deco has direct talk with Chelsea scheduled tomorrow. Talks still on after agreement with Leeds. Barcelona and Arsenal will try until the end. A reminder, Barca agreed personal terms with Deco 4 months ago. ये किया है टैग मुझे शायद ने ऑन इंस्टा. थैंक्स शायद, मैं शेयर नहीं करने वाला हूँ इन सम टाइम, लेकिन आई थिंक ऑलरेडी हो चुका है एज पर रिपोर्ट. डेको इज ऑलरेडी इन लंदन टुडे एज पर रिपोर्ट, तो हो सकता है ये कल का था, लेकिन नेवरदलेस. एंड यस, लेट्स गेट टू 150 क्विकली. Berardi is a bang below average winger. Same goes for Locatelli, the two most hyped players just because they had good Euros. अभिषेक वही मैंने बोला ना, काफी लोग जो have a very good international tournament, they kind of get hyped for whatever reason. कल बाय द वे Locatelli आया था हुए में. Is it correct time that Madrid should promote Latasa or buy back names? Jovic on loan. I think Jovic is Fiorentina. कहाँ जा रहे हैं वो? I think is it Jovic or who's Mariano? Who's going on? Who's going to Fiorentina? One of them is going to Fiorentina. Correct me if I'm wrong, Madrid fans. लेकिन मैंने देखा था, let me just check it up quickly. लेकिन pretty sure वहाँ पर कुछ होने वाला है. अच्छा बाय द वे, फेब्रिशियो ने बोला है, ब्रूनो फर्नांडिस ने कोट किया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिचुएशन, आई स्पोक टू हिम वीक्स अगो, सो आई एक्सपेक्ट टू मीट क्रिस्टियानो on day 4 for pre-season trainings, and there's nothing else. So Cristiano Ronaldo CR7 soon is going to be at Manchester United. उससे याद है, we have new emojis as well, so do check it out for members, that is. Okay, what else? I think if I'm not wrong, I'm trying to look for some news. Okay, that is okay. I'm not able to find, but I'm pretty sure it was a Real Madrid player going to Fiorentina. One of the two forwards हम जो बात कर रहे थे ना. लेकिन अगेन मैंने शायद कल कवर किया था, बट आई एम जस्ट वांटिंग टू काइंड ऑफ कवर क्विकली इन केस मैं कुछ भूल रहा हूँ. लेकिन सर्टेनली देयर इज लुका जोविक ही है. चलो मैं फाइनली टाइम लेकर चेक तो कर लिया, लुका जोविक ही है जो जा रहे हैं. Broha can be a main striker as well. Chelsea don't have recognized striker. Yeah, fair point. Fair point. ओके, मॉड नहीं हो क्या आप यार शायद, लेकिन भाई अगर कोई लिवरपूल के अगेंस्ट बोलता है ना, तो थोड़ा चिल मारना, थोड़ा सा लीनियंट रहना, और मुझे पहले बोलना और थोड़ा वार्निंग देना, लेकिन बी वेरी वेरी लीनियंट बिकॉज इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. तो प्लीज बी लीनियंट शायद, लेकिन कोई नहीं, हम अभी के लिए बना रहे हैं आपको मॉड. और वही आयरनी वी हैव, आप देखो इट इज लिटरली अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी बिकॉज वी हैव मॉड्स. Chelsea fans is other, we have Man City fans, we have Liverpool fans, we have Real Madrid fans, Barca fans as our mods. Imagine that. Don't worry, mate, you got world-class Sterling on the way. Chelsea, like United, all talk, no signings. Arey bhai. Arey, thank you, man. Thank you. That comment means a lot. That comment means a lot. Brilliant. Lekin it's just a passion. You know it's passion. And of course, yaar, main to aata hu. You are all my friends. So I come here just to kind of speak football. I don't have my batchmates of football, for whatever reason, most of them are thinking that they become too aged. अभी क्या ही तो बात करें फुटबॉल के बारे में, so they are not wanting to come, they are not wanting to even support me
because they're busy, which is absolutely fair. But you guys are always there for me. That is why I love chatting with you all, and you all are my friends for a reason, right? I hope Dembele renews on our terms. Raphinha's transfer fees are too high. I would rather spend that money on the defense and Leva. Fair point. Fair point. I think he is. I think he is. I know that he struggles. He has a lot of struggles as well. Villarreal wasn't दूध की धुली नहीं थी. लेकिन he is a leader भाई मानो वही मैं बोल रहा हूँ. He is a leader. He's a proper leader. He scores you goals. Plus Premier League has changed a little bit. Kafi teams play three in the back system at times, right? So there he can basically do well as well. So you never know. In my opinion, he can. Like even in a Pep formation, for instance, if come on, अगर लपोर्ट अच्छा कर सकता है तो पावर टॉरेस भी कर सकता है, in my opinion. Man City, Liverpool, Spurs, Chelsea. Okay, Utkarsh, thank you for putting Chelsea. I didn't put, लेकिन हाँ, hopefully they will be there once the signings are made. I got tension ना लो. चलो, thanks. Okay. Big up to Sports Talk with Mahim. और बाय वे स्पोर्ट्स टॉक विद माही मैंने कल रियलाइज नहीं किया था भाई आप ऑलमाइटी गोट हो सो ही इज आवर ऑलमाइटी गोट यस आवर फर्स्ट ऑलमाइटी गोट मेंबर स्पोर्ट्स टॉक विद माही बिग अप भाई मतलब टू बिकम अ मेंबर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट लेकिन हाँ अगेन आप चाहते हो अगर मुझे शाउट आउट करना कोई पर्टिकुलर चैनल और इंक्लूड योर लिंक आई एम मोर देन हैप्पी टू डू इट लेकिन अगेन थैंक्स फॉर द सपोर्ट इट मींस अ लॉट ब्रिंग इन योर क्वेश्चंस एज वेल ऑलवेज गुड टू हैव यू. Okay, Jordan in the house. Long time no see, Jordan. How have you been? Liverpool, happy with the Liverpool signing? How is Darwin Núñez going to fare you believe? Okay, then hearing Sterling to Chelsea is almost done. Is true. Yes, Rocky, this is almost done. As per reports, things have been agreed upon. लेकिन अभी wait करिए Chelsea just for Man City to decide. Are they ready to get rid of Aki within 40 million as well, or they want north of 40 million? अगर वो they are okay under 40 million, Chelsea are bidding 35 million, close to 35 million pounds. And they want Sterling. So I think दोनों को मिलाकर I think if I'm not wrong Chelsea ने दिया 85 million pounds or at least they are talking about it. And now the thing is अगर दोनों साथ में आएंगे ये कहेंगे इसलिए time लग रहा है. In my opinion, maybe they will do Sterling first and then maybe slowly Aki आ जाएंगे अगर we are not able to get in any other player center half. Okay, I don't know Arsenal will finish top 4 or not अभी से डर लग रहा है. अरे विप्रा आपका बेटर होगा सीजन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मैं बता देता हूँ आर्सेनल 5 आएगा चलो देखते आई विश दे कम फिफ्थ और रादर आई विश दे डोंट इवन कम फिफ्थ नथिंग अगेंस्ट विप्रा एंड आर्सेनल फैंस बट कम ऑन बीइंग अ चेल्सी फैन मुझे बोलना था वो यू नो दैट इज समथिंग ऑफ अ फैक्ट आप भी बोलोगे आर्सेनल फैन हो फॉर चेल्सी राइट लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट दे हैव डन ग्रेट साइनिंग्स वेरी गुड साइनिंग्स नॉट ग्रेट साइनिंग्स वेरी गुड साइनिंग्स इन माय ओपिनियन जेसुस कैन सडनली डू अ जॉब 15 गोल मार सकते हो तो आई थिंक दैट्स गुड फॉर देम द रॉक विंगर वाला और ओके पता नहीं हम आपस में बात करो शायद आप लोग लेकिन टीमो वर्नर या पुलिसिक भाई टीमो वर्नर जाएगा पुलिसिक जाएगा तो यार गलती होगी एब्सोल्युटली नहीं भाई नहीं और थैंक्स आने के लिए लाइक कर देना भूलना मत एंड लेट्स सी डू वी नीड साइनिंग मिडफील्ड इन चेल्सी या डीसी हाइप we need a DM 100% हमें चाहिए एब्सोल्युटली चाहिए लेकिन यार अगेन भाई काफी लोग हैं काफी सारे स्टोरीज हमने बात की है ऑलरेडी यार ब्रेकिंग न्यूज यही था इस स्ट्रीम का कि यार स्पर्स आर पॉसिबली गोइंग टू बी साइनिंग 7 players this window yes you heard it here first 7 players Spurs are possibly going to be signing हाँ minimum 5 मैं बोलूंगा minimum 5 signings in a particular window Daniel Levy under Conte और rather the other way around भाई what a window इसलिए मैं डाला हूँ स्पर्स को ब्रेकिंग न्यूज वो भी है in the top 3 as things stand things might change because of the transfer window and because of the form and fitness and pre-season जो होने वाला है हम कवर करेंगे वो भी by the way यार लेकिन उतना ही नहीं मैन यूनाइटेड हो सकता है वो लोग अनाउंस करें 2 साथ में दैट इज टायरल मलेशिया जो I think he got a bid again hijack attempt from I think it was Lyon but finally Fino decided nahi he will go to Manchester United and he also wants to go to Manchester United. Frenkie De Jong if he's going high chance that Raphinha के लिए पैसा यूज करेंगे बारसा वो अगर वो नहीं चाहते हैं to give money on Kounde or Lewandowski one of them क्योंकि they might also go for Koulibaly right but then Dembele free हो सकते हैं that is why Chelsea are still interested and the reality is हमें एक मिलेगा just be patient yes we are clueless we are going to hijack every transfer right now because हमारे पास डायरेक्टर नहीं है we are looking for a club director as well what not लेकिन don't worry definitely मैं थोड़ा positive रखना चाहूंगा before ending the stream but
बार्सिलोना दे विल लूज मेम्फिस डिपाई। कहाँ जाने वाले मेम्फिस डिपाई आप बोलिए? अभी भी बेसिकली एरिक टेन हाग काफी डच प्लेयर्स के साथ लिंक्ड है, सो मैनचेस्टर यूनाइटेड कम बैक एनीवन? जस्ट सेइंग इट आउट देयर। नहीं लग रहा मुझे, लेकिन जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। लेकिन टॉकिंग अबाउट डच प्लेयर्स, मैटायस डे लिग्ट टू चेल्सी होने वाला है, लग रहा है, लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए हो सकता है मे बी वी माइट गो फॉर नेथन एकी फर्स्ट एज अ स्टॉप गैप, थिंकिंग दैट एक होता है पुल, डच प्लेयर आ जाते हैं तो पुल हो जाता है। मैटियास डे लिग्ट विल इजीली कम टू चेल्सी अलोंग विद द मनी जो हम देने वाले हैं, प्लस वर्नर या पुलिसिक, उन्हें चाहिए पुलिसिक, हम देने वाले वर्नर। हो जाएगा, लेकिन बिकॉज उनके जो सीईओ उन्होंने बोला है कि यार हम नाखुश प्लेयर को नहीं रखना चाहते, तो दैट इज व्हाई आई एम सीइंग दैट हैपनिंग। लेट होगा लेकिन हो जाएगा, लेकिन दैट्स व्हाट वी वांट, सम अर्ली प्लेयर्स। टॉकिंग अबाउट अर्ली प्लेयर्स अगेन, बट स्पर्स आर डूइंग दैट बिजनेस अर्ली यार, मतलब क्या ही तो बोलूं, लॉन्ग ले तो स्पर्स हो गया है, आई नो नॉट अ ग्रेट वन बट नॉट अ बैड वन ईदर। वेस्ट हैम आर अपग्रेडिंग, अरमांडो ब्रोहा चाहिए उन्हें, यू नो, अपने लेवाई कॉलविल इज लिंक्ड विद लेस्टर एंड व्हाट नॉट। तो देखते हैं लेस्टर क्या दोगे फफाना में, नहीं ना, तो यार कम ऑन, चेल्सी क्यों देगी, मतलब नहीं देना चाहिए। और हकीम जियेश टू एसी मिलान, ये इसलिए रुका है इन माय ओपिनियन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव नॉट गॉटन ओवर द लाइन विद रफीनिया और डेम्बेले, ठीक है, नहीं तो वो हो जाता अभी तक इन माय ओपिनियन। तो दैट इज व्हाट आई थिंक, मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर स्टोरीज हमने कर लिया है। लेट मी क्विकली सी एनी ट्वीट्स, इंपॉर्टेंट ट्वीट्स है कि नहीं। और यस, रियल मैड्रिड फैंस, लुका जोविक के बारे में बात किया था हमने, आई डोंट थिंक वी नीड अ ग्नाब्री, क्योंकि ग्नाब्री लुक्स लाइक ही माइट स्टे एंड बायर्न म्यूनिख माइट डू अ मैडनेस। ओके, यहाँ पर एक्सक्लूसिव एक आया है ट्वीट फ्रॉम फेब्रिशियो रोमानो, यहाँ पर शेयर कर देते हैं ना बिफोर शेयरिंग। एंड अगेन पीपल डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि वील हैव अ लॉट ऑफ पीपल फॉलोइंग दिस न्यूज, आई एम प्रीटी श्योर। आई होप यू आर एबल टू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने क्या हाईलाइट करा, एक सेकंड, हाँ करेक्ट किया। बार्सिलोना contacted Leeds yesterday night to submit new bid for Raphinha. Following talks with Deco, Barca verbal proposal does not fulfill Leeds' request yet. Leeds insist on respecting the agreement with Chelsea for £60 million. It is still open on player side. So that is why the ball is in Raphinha's court, but एडवांटेज टू चेल्सी। और वहां पर स्टीफन ओर्टेगा, न्यू मैनचेस्टर सिटी गोलकीपर, टू बी अनाउंस सून, कॉन्ट्रैक्ट अंटिल जून 2025 फॉर न्यू सेकंड गोलकीपर, जस्ट लाइक स्पर्स को भी मिला है, आर्सेनल को भी मिला है, और चेल्सी को भी मिलने वाला है अगर के पास जाते हैं। अभी तक आसार लग नहीं रहे लेकिन दैट इज व्हाट इट इज। और भाई बाकी न्यूज देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, बस यही था, आई थिंक इंपॉर्टेंट न्यूज अभी के लिए यही था। और बिफोर एंडिंग लेट्स टेक अ कपल मोर कमेंट्स। The chance of Bernardo to Barca is very low. 100% agreed. Bernardo will stay, in my opinion. I don't think Barca invest करने वाली on Bernardo. They might go for Raphinha with the De Jong money. That might happen though. This season top four will be Liverpool, Man City, Chelsea, and Arsenal. Fifth Spurs, sixth will be Man U, seventh West Ham, and eighth Brighton. Wow, what a prediction by Syed. Brilliant prediction. As always, we need three center back at Chelsea, at least two stable or backline. यार वही मतलब अगर two center backs भी चाहिए ना, बैक फोर से भी खेले ना, वी नीड सेंटर बैक बिकॉज वी डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस बिहाइंड, और पेस भी इतना नहीं है कम, यू नो, एज अ टीम, बिकॉज रूडिगर हैड अ ग्रेट पेस, रिमेंबर रूडिगर हैड अ ग्रेट पेस एज वेल, काफी अंडररेटेड था उनका पेस। यू वे कॉन्फिडेंट दैट सिटी टू मेक मूव फॉर डे लिग्ट? ओह नो, ये कब हो गया? अरे नहीं यार, कम ऑन। तो बेसिकली हमें आके देंगे और खुद डिलीट ले लेंगे? नहीं भाई, हमारा प्लान यही कि आके और डिलीट लेंगे हम। ये मुझे वीक लग रहा है, मुझे वीक लग रहा है। पावर टॉलरेंस फिर भी मैं समझ में आता है, लेकिन नहीं, डिलीट नहीं है। The Rock actually, okay, they are talking among themselves. I consider Son as a better player than Salah. What do you think? I don't think we can compare, right? दोनों अलग ही विंग में खेलते हैं आज के दिन में। हाँ, Son used to be a right winger in the Bayer Leverkusen days, if I remember right. But I think we cannot really directly compare. So I think आज के दिन में I will still say that Salah is a better as in player in terms of giving you more in terms of numbers. लेकिन I agree as a better team player, Son अगर मैं pick कर रहा हूँ for myself, I agree. लेकिन again different wings है, why not both? Do you think getting Raphinha has a chance to redeem himself for getting not getting Bernardo? I don't think it's about redeeming. वो आता ही नहीं है. I don't think it's about that. It's about getting things right. ओ यस यार, हमारी ट्रांजिशन में आपको याद है तो हर एक वॉच अलॉन्ग में हम बात करते थे। ट्रांजिशन में मिडफील्ड गायब थी भाई, मिडफील्ड गायब थी, कोवाचिच अकेला बंदा रहता था बहुत बार। ओ यार, याद दिलाने के लिए थैंक यू भाई। चलो करते हैं हम 11 बजे, ठीक है।
to see you all at 11 o'clock. Hopefully before 10:45 कर लेते हैं. I'll try and put it 10:45. 10:45 FIFA stream on Almighty Sports Plus. The link is below. वहाँ पर हो जाइए. Definitely career mode will continue. Retro FIFA. Delict or Koulibaly. Koulibaly, if I'm being really honest, लेकिन personal choice होगा Delict, लेकिन Koulibaly is a better signing अभी के लिए. Newcastle भाई again they are linked to a lot of players, but the fact is भाई आप लोग कर दिए already signings. I think you have done a couple of signings, so I think you're good for now. And हाँ, the game changer will be Neymar कहाँ जाते हैं, so maybe Newcastle will go for a big name signing after that. Big up, bro. Yes, absolutely, David. Big up to David. Do check out his channel, bro. Everyone. And yes, you were confident. नहीं लग रहा ये again. But yes, thanks everyone. 1.5 घंटे हो गए और 1.5 घंटे अभी से you will be finding me on Almighty Sports Plus, that is FIFA retro stream for career mode. Hopefully setup हो जाए तब तक. Hopefully I don't disappoint you, and do back me for all the videos that I do on both the channels. Means a lot. Who have been backing me. Brilliant. And great to see this. लेकिन चेल्सी भाई कर लो भाई, प्लान करो थोड़ा जल्दी से. बैठ को इस वीक बैठिए, प्लान करिए और बैकअप प्लान भी करिए, and then sign someone for God's sake. See you at 10:45 at Almighty Sports Plus.